Yes. So can you hear me? नमस्कार 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आप सभी का स्वागत है. I welcome one and all to the 17th edition of Mumbai International Film Festival of Documentary Films, Short Films and Animation Films. इस फेस्टिवल को देश विदेश से सभी लोग यहाँ पर भागीदारी कर रहे हैं और तमाम डेलीगेट्स आए हैं, फिल्म मेकर्स आए हैं. हम यहाँ पर खड़े हैं नेहरू सेंटर में जहाँ आज रंगारंग कार्यक्रम होगा, उद्घाटन होगा. तो लेकिन उससे पहले हम आपसे कई डेलीगेट से मिलवाने वाले हैं. लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये कार्यक्रम दूरदर्शन नेशनल नेटवर्क, दूरदर्शन इंटरनेशनल, दूरदर्शन सह्याद्री और बहुत से तमाम रीजनल चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है. अब फिल्मों की बातें हो, डॉक्यूमेंट्री की बातें हो, वृत्तचित्र जो हमारा आईना होती है, एक प्रतिबिंब होता है, जो हम सोचते हैं वो हम सेल्यूलॉइड पर लेकर आते हैं. The films, being a part of MIFF is very energetic, very enthusiastic, and it is very vivacious to be a part of MIFF. But there are so many people who are arriving. I would like to tell you who are the people and what are the competition films. But before that, we would like to welcome some few delegates and talk to them about MIFF, about their experience. I would like to welcome the one and only actor with a grand voice, Mr. Dalip Tahil ji. Mr. Dalip Tahil, welcome to this MIFF. Tell me, sir. Very good afternoon to you. Very good evening. Thank you, sir. Thank you so much for inviting me. I love your voice. It's the grand voice that we have in the industry. Sir, what is your take on this MIFF? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह सजा के रखा है. पहले तो मैं फिल्म्स डिवीजन को, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज किया है. सो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू देम and all the hard work that has gone into it. I know that it's been very difficult after the lockdown and all the other kind of pressures that films division and the organizers must have faced. But today is a day for celebration for the 17th Mumbai International Film. You're looking lovely. Thank you. It's always a pleasure. And my compliments to all the organizers so and everybody. What are you looking forward? What kind of films are you going to attend? Well, I haven't actually been through the details of the program. You will? But I'm going to try and see as many films as possible. It's a short film festival, so for all of you, there's going to be a lot of animation films. Right. There's a documentary category. Right. There are categories of short films. Correct. So it's going to be fantastic. I am a great admirer of short films. Oh. And I think that the short films has a great future. It always has had, and now the world is acknowledging short films, and they're getting and the response is growing every single day. दलीप जी, आपने कभी खुद फिल्म बनाने की नहीं सोची, डॉक्यूमेंट्री? मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाने की नहीं सोची है, लेकिन मैंने एक टाइम पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा था और मैं फीचर फिल्म बनाने वाला था. Okay. लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं रही, उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है. तो I was actually That's not true, but मेरे एक्टिंग में मैं काफ़ी बिजी रहा, तो मुझे वो मौका नहीं मिला. लेकिन अब मेरे पास एक और स्क्रिप्ट है और मैं उसको डेफिनेटली प्रोड्यूस या डायरेक्ट करने की सोच रहा हूँ. Thank you so much for being here. I hope you enjoy the festival. Thank you. Thank you so much. And to the viewers, बहुत मुबारक हो. Thank you very much. और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन और नेशनल कंपटीशन सेक्शन की फिल्में होंगी. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट लेटर बिकॉज वी हैव गॉट अ लाइनअप ऑफ गेस्ट. आई वुड लाइक टू क्विकली कॉल द नाटककार मिस्टर अशोक बंतिया जी. नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका. कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. आपको कैसा लग रहा है ये फिल्म बहुत फेस्टिवल? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. इतने फिल्म मेकर, नेशनल इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स एक जगह इकट्ठा करना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ही काम है. फिल्म
आपको बता दूं फिल्म्स डिवीजन पिछले 1948 में फॉर्म हुआ था जी। और पिछले इतने सालों से तकरीबन 9000 फिल्में प्रोड्यूस कर चुका है। जी हाँ, जी हाँ, जी। मैं तो हिस्सा रहा हूँ। बिल्कुल। मैं फिल्म्स डिवीजन का हिस्सा रहा हूँ, मैं सेंसर बोर्ड का हिस्सा रहा हूँ। क्या बात है। मैंने काफी फिल्में देखी है, आई हैव सीन लॉट ऑफ फिल्म्स, और मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स का तो बहुत बड़ा मतलब फैन मुझे है। बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट दैट आई एम हियर, आई एम इनवाइटेड हियर, and it is so well organized festival, and so many people, filmmakers, you interact with those filmmakers, and as an actor I learn a lot about it. Thank you for being here, and I hope you enjoy the festival. I would खूब enjoy love to the करिएगा। entire festival, I would love to watch बहुत it. बहुत शुक्रिया। Thank you very And much. quickly we have a delegate from Faroe Island. Let me invite them and talk to them. Thank you you, so much. thank you. Thank you so Bye-bye. much. Most welcome. Hello, sir. So kindly introduce yourself and please talk about how it is to attend the MIFF. You have come for the first time to India? Shall we? Yes, the first time. Fantastic. Shall we introduce ourselves first? Yes. Gudmund Helmsdal from the Faroe Islands. I'm the director of the film Brother Troll that's going to screen here. And this is Nikolai Falk, the main actor. Hi. You're acting in the film. Okay, sir, please repeat your name. Gudmund. Okay, Gudmund okay. Helmsdal. Good man. And how was your experience so far in India? It's been amazing. We went and got our delegate passes today, and this is the first time in India, so just went and took it all in and experienced the city, walked a bit around today. Thank you. I hope you sit there back, relax and enjoy. Thank you so much. Thank you. So Thank you. much. और दोस्तों, thank you sir. Thank you sir. We are live on the Doordarshan and film makers की बात करें तो हमारे बीच बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की है और हमारे बीच आ चुके हैं। पांडे जी, प्लीज आप बताइए आपका एक्सपीरियंस, आपकी फिल्म दिखाई जा रही है इस 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में। हाँ जी, मैं ये पहली बार अटेंड कर रहा हूँ और मेरी एक फिल्म है जो मैंने बनाई है जी। एवरी लाइफ मैटर्स, वो इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। और जो लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी क्राइसिस हुई हैं, बहुत लोग सफ़र रहे हैं, तो उन्हीं में से किसी एक की कहानी है। मतलब बहुत वास्तविकता को आपने बड़े पर्दे पर दर्शाया है। जी हाँ, मैंने कोशिश की है। अब तो ऑडियंस देखने के बाद बताएगी कि कहाँ तक हम सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल, आप एंजॉय करिएगा और उम्मीद है कि बहुत सारी फिल्में आप देख कर जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, गोल्डन कॉन्च, सिल्वर कॉन्च के लिए कॉम्पिटिटिव फिल्में हैं, लेकिन हमारे बीच जूरी मेंबर श्री सुजीत नार्वेकर जी आ चुके हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। संजीत नार्वेकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर प्लीज यहाँ पर आइए। सर, आप जूरी में मेंबर हैं, तो कितना आसान था या कितना कठिन था, ये पहले बताइए। मिफ बाय इटसेल्फ कठिन है। मैंने मिफ के सारे एडिशंस रहा हूँ उनके साथ। 1989 से लेके आज तक मैं मिफ से जुड़ा हूँ और मेरे ख्याल से दिस इज़ द 17th फेस्टिवल जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। और जूरी मेंबर मैं भूल गया, मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी में तो बहुत रहा हूँ, लेकिन जूरी मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड टाइम होगा, याद नहीं आ रहा है। कठिन होता है क्योंकि एक इच्छा ये होती है कि अच्छे फिल्म को अवार्ड मिले, अच्छे फिल्म मेकर को अवार्ड मिले, अवार्ड मिलने के बाद उनको प्रोत्साहन मिले, तो ये सब चीज़ नज़र रखते हुए सब करना पड़ता है। सर, आप नेशनल जूरी मेंबर हैं और हम चेयरमैन हैं। सर, हम आपके हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस साल 800 से ज़्यादा फिल्में दोनों सेक्शन में आई हैं और दर्शकों, हम आपको बता दें, वाकई डिफ़िकल्ट टास्क है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू चूज़ फ्रॉम दोज 800 फिल्म। यू हैव कम डाउन टू हाउ मेनी फिल्म्स सर? नहीं, सेकंड टायर में आते हैं। क्या होता है कि 800 फिल्में जो आती हैं उसको सिलेक्शन कमेटी पहले सिलेक्ट करती है और वो नीचे करके वी कम डाउन टू, जैसे कि हम लोगों ने जो देखा कि 30 आवर्स की फिल्म देखी, मतलब टोटल व्यूइंग टाइम वाज 30 आवर्स, उसमें से फिर हम सिलेक्ट करते हैं और अलग अलग कैटेगरीज में होता है, तो उस हिसाब से है। हाँ,
ओके वहाँ भी अलग पूछेंगे या वही बोलूँ? सर सर सो ये फिल्मों को आपने देखकर आप उत्साहित हैं इस साल के मिफ, क्योंकि हम हाइब्रिड भी जा रहे हैं. आई वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स that we are going hybrid also. So whoever have not registered themselves as delegate, please go soon online delegation. आप अपने आप को रजिस्टर करिए ताकि आप एक से एक अच्छे फिल्म का लुत्फ उठा सकें. हाँ, ज़रूर उत्साहित तो हैं. हर फेस्टिवल में उत्साह होता है कि नए फिल्म मेकर्स की फिल्में देखनी मिलती है, पुराने फिल्म मेकर्स की फिल्में देखने को मिलती है, और ख़ास करके वो खुशी होती है जब नए फिल्म मेकर्स आते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, नए तरीके आते हैं फिल्म बनाने के, उससे तो उत्साह ज़रूर होता है. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और दोस्तों हमारे बीच एक बहुत अच्छी आवाज़, समय, हमारे लिए भी समय बहुत जल्दी से निकलता जा रहा है, इसलिए हम बहुत जल्दी से स्वागत करेंगे श्री हरीश भिमानी जी का. आप तो दूरदर्शन के साथ जुड़े हुए हैं कई सालों से, और हरीश जी आपने स्वयं कितनी ही फिल्में बनाई हैं. योर टेक ऑन टुडेज मिफ. सबसे पहले नमस्कार. और दिस इज़ अ डबल सेलिब्रेशन फ्रॉम मी, क्योंकि मैंने टेलीविज़न न्यूज़ के साथ अपने करियर की शुरुआत की और वॉइस ओवर्स में फिल्म्स डिवीज़न के साथ, और ये फिल्म्स डिवीज़न के तहत मिफ हो रहा है. दिस ईयर्स मिफ हैज़ अ सॉर्ट ऑफ डबल एडवांटेज, जिसको प्रेमचंद जी कहते थे कि दोनों हाथों में लड्डू हैं. One is that there is a wider participation of international repertoire, and another is that the MIFF has gone the extra mile to tier 2 and tier 3 towns to get people who get young filmmakers, aspiring filmmakers, to bring them on this platform, and इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा किया है. जो उन्होंने जीवन में शायद कभी सोचा नहीं था वो होने जा रहा है, और जिसकी शुरुआत अभी होने जा रही है. सर आप जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पर आपने सभी को अपनी आवाज़ का जादू चलाया है, उन पर चला है, तो लेकिन ये जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कि नेवर गिव अप एटीट्यूड होनी चाहिए कि हमें अगर लगता है, अगर आपको लगता है कि मुझ में कुछ है, मुझ में कुछ ऐसा है जो मुझे कहना चाहिए, जो मुझे लोगों से साझा करना चाहिए, बांटना चाहिए, तो प्रयत्न करते रहिए, क्योंकि हमारे देश से अधिक कहानियाँ, हमारे देश से अधिक प्रसंग कहीं और नहीं होंगे, और वो देखने के लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, दुनिया इंतज़ार कर रही है. दोस्तों हरीश जी ने कितनी अच्छी बात की. मैं तो इनकी फ़ैन हुई, इनकी आवाज़ की तो हर वक्त रही हूँ, एंड आई हैव गॉट योर ब्लेसिंग सर ऑलवेज. मगर जो आपने बात कही, नेवर गिव अप, इट इज़ द ट्रू सेंस that one should not give up, especially the students, especially जब hard times हम face करते हैं और उसके बाद आते हैं, हम वही मेहनत मशक्क़त के साथ काम करते हैं. जी, इतना याद रहे, फिल्में थी, हैं और रहेंगी, चाहे जॉनर कोई भी हो, एनिमेशन हो, शॉर्ट हो, फीचर हो, डॉक्यूमेंट्री हो. फिल्में हमारे समाज का, हमारे मस्तिष्क का, हमारे विचारों का प्रतिबिंब हैं, और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे. देखा मैंने सर, स्टार्टिंग में मैंने यही कहा था कि फिल्में जो है, स्पेशली वृत्त चित्र है, जो हम सोचते हैं, बाइबन कॉड्रॉन ने एक बार कहा था कि यू डोंट गेट टू चूज योर सब्जेक्ट, दे कम एंड ग्रैब यू, पाउंस यू एंड पुल यू आउट ऑफ द बेड. ओनली देन यू मेक अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म वेरी क्लोज टू रियलिटी. My short definition of documentary is, my short definition of documentaries is real on reel. Wow. And that is a motto of my documentary, global documentary platform which I'm nurturing, called documakers.com. Fantastic, Visit sir. it, join it, participate. Thank you, sir. Thank you for joining us. और बहुत बहुत शुक्रिया, आप enjoy Thank you very करिएगा. much and all the best to Thank MIFF. you. Thank you. Thank you. So this was Real on Reel.
और रील के लिए, रील की जब हम बात करते हैं तो हमारे बीच एक लेजेंडरी फिल्म मेकर है और आइए हम उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्ते। हमारे बीच है श्री किरण शांताराम जी, राजकमल स्टूडियो से आए हैं और इनके पिता जो लेजेंडरी फिल्म मेकर रहे हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक फिल्में बनाई हैं, वी शांताराम जी, उनके नाम पर भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना है। सर आपका बहुत स्वागत है। और बोलिए। ये बहुत खुशी की बात है कि दिस इज द 17th MIFF Film Festival. Yes. And for last 17 years, this Government of India and the Films Division is giving the award, a Lifetime Achievement Award on my father's name. Of course, it is absolutely right thing, I think, because the Films Division, people doesn't know, the Films Division when it started with my father, who was the chief producer first time. He was the chief producer of the Films Division. Right. So we all know that he was a chief producer with Films Division. And along with that, when you select all these 17 people, Yes. Filmmaker, producers, directors, different, it's a great movement. For them, it is a lifetime achievement award. But for my father always says, the lifetime achievement awards that the life of their when they live, but we give the encouragement for the further life that they should live and make more program and more money, more film Yes. for this lifetime achievement award. सर आपका आशीर्वाद मिफ के साथ हमेशा रहे, हमेशा रहेगा, यही कामना है हमारी। हमेशा रहेगा। Till my father's name is there, I am always there. Thank you very much and wish you all the best to all the people. बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। और जब बात करते हैं फिल्मों की, जैसे पहले मैंने कहा 800 से भी ज़्यादा और दुनिया के हर कोने से हमारे पास फिल्म्स आई हैं, बीट एस्टोनिया, बीट फेरो आइलैंड, बीट फ्रांस, बीट जर्मनी, बीट इटली। तो दोस्तों हमारे बीच फ्रांस से डेलीगेट आया हुआ है, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड वेलकम। प्लीज Thank you. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Colorful. Happy to be here. Yes. I am Mina Rod, Yes. filmmaker and director of festival Fantastic. in Paris, in France. I'm originally Iranian. I live in France and I organize the festival and the international networking for the documentary filmmakers. Ma'am, what's your name? My name is Mina Rod. Oh, ma'am is also a jury member, right? Yes. So, ma'am, what difference do you find when you're being a jury member of Mumbai International Film Festival and the other festivals around the globe? What is the difference? Actually, I have to tell you that I was jury in the other festivals, but I found that here in Bombay, being the jury and also the chairwoman among my other colleagues, 4 other colleagues, be the chairwoman of the 17th Bombay International Film Festival has been an honor. There is so much warmth and professional hospitality of all the team that has been being with us. We have So that goes kudos to MIFF and the Films Division team for having a good hospitality. Yes. Thank you, ma'am. और आपको मैं नमस्ते कहूँगी. And I hope that Bombay International Film Festival will go on because it's not only a festival for India, it's a festival for South Asia, and it's very important for the future of documentary in the world. Yes, and ma'am, I must say that MIFF is one of the largest and biggest film festival in South Asia, and this time it is going hybrid. So we are very proud of the fact. Long life for Bombay International Film Festival. Thank you so much. Thank you, and enjoy yourself. Thank you. Thank you. And now, ladies and gentlemen, we have got so many delegates. जैसे हमने कहा, हम आपसे तो बात कर ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास delegates हैं, film makers हैं और रशिया से 2 हसीना हैं, beautiful girls. Welcome and please introduce yourself. Welcome. Please introduce yourself. Yes. I am the director of the Russian Center of Culture and Science in Mumbai. Fantastic. Yes, and this is. I'm the Deputy Consul General of the Russia in Mumbai as well, Kristina Boyko. Ma'am, most welcome. So this is the first time you're attending MIFF?
Yes, it's the first time, and we are very happy to be here because of several years of COVID, everything was closed, and Yes. this live event is very nice. Yes. And what are you looking forward to see in MIFF? We are very proud that this year one of our participants, Alexander Petrov, take part in this. And he is very famous. He has the Oscar for his film The Old Man and the Sea. And we are expected that he will have a success here. Yeah, we wish all the successful. Thank you so much, and I hope you enjoy, have a great time attending MIFF. Thank you very much. Thank and you. good luck to the festival. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. और जब हम बात कर रहे हैं हमारे पास इंटरनेशनल कंपटीशन से कई कई डेलीगेट्स आए, लेकिन हर कोई का सपना होता है कि ऑस्कर तक पहुंचे. सो हमारे मिफ में एक हमारे डेलीगेट आए हैं, हमारे गेस्ट हैं सर, जो ऑस्कर के कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में रह चुके हैं. सर, मोस्ट वेलकम एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Ujjwal Nergudkar. I am the Oscar jury, and particularly I am now connected with this festival. I have been to this festival program earlier, but this year we are connected from SMPT, Society of Motion Picture and Television Engineer. I am the chairman for India section, and we are technical partners for this festival to do the calibration of the theatre so that the experience what the people will get and the film producer, it will be interesting. You will get the best quality picture and sound, and I am very happy that I am connected with this festival. I sincerely thank Sri Ravinder Bhakar sir, Yes. the Managing Director of Film Division and NFDC, for giving us this opportunity to do the calibration for the first time for MIFF. Right, So thank you very much. Thank you very much, and I hope you enjoy yourself. We have the guest of honor, a very revered personality from Kerala. Let me introduce you to Padma Shri, Mr. Shaji Karun. Welcome, sir. Thank you. You are a national award winner yourself. और सर, आपसे मुलाकात करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. You have seen it all, you have done it all. Ladies and gentlemen, he is an iconic film personality. Sir, Piravi was one of the most famous films that he made. So your take on this film festival? It's a great honor for me to be here with, rightly I say that it is a festival which is being conducted by the government. And one more thing which I always believe, that this is for the people, for the short films, which they are always struggling and getting an opportunity to do. And present their films here at this moment is one of the greatest opportunity for anybody, any filmmaker, because they do it with budgeted films, and then they come up with clarity. They can show it to the public with the great concerns and feelings. That is more important with the people around them. So what is the message? Since आपने हर तरह की फिल्में बनाई हैं, हमारे जो young students हैं, because यहाँ पर we are going to have a best film category from IDPA, where V Shantaram Award goes to the legendary filmmaker. Similarly, what would you give a message to the young filmmaker? Because there is no glamorization in documentary film. See, the future of cinema always comes from the young generation. They see a lot of clarity what they see at the present moment, and they capture it for the future moments, and that makes more clarity in many ways. I'll say that what is the present emotion at later stage for people to watch and find out. There is something which I lost it, but that can be recollected later. Young people see them at that point, and the message, or rather you say that as a filmmaker, it's a great opportunity to say that one visual is 1,000 words for them. Right. That makes more clarity that why they wanted to capture, why they wanted to show. A part of the heart is in their image. That makes more sensible. Okay, so when you are making, sir, pan-India, you have seen all the film festival across. How much do you love MIFF? I will just ask that one question. No, MIFF. Because it is our own MIFF.
It is our own, as you said very rightly, MIFF is your own, it has your own heart there, your own mind there, your own vision is there, your own image is there. That is more clarity. Any world, anywhere, that small little place is more important for the world. It makes more sensible that we cannot miss a small flower is very important for all of us. Which is that smell, that color is like our milk. It will contribute a lot for the future. I'm sure about it. So, it's a beautiful thought that you have exchanged, that a small flower makes a difference. उसकी खुशबू हर जगह अगर फैल जाएगी तो वाह वाह ही हो जाएगा. सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप हमारे साथ बने रहिए. Please give us lots of blessings we need from a revered person like you, sir. Thank you, and it is always that the young people will follow the beam as the one of the important milestone in their life. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, friends, we are going to have the inauguration in Nehru Center very soon, but we have got great personalities, revered guests amongst us, और हमारे बीच आ चुके हैं पाटिल जी, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, Union State Minister for पंचायती राज. सर, आमचं खूप खूप स्वागत आहे आणि आम्हाला हे सांगा की मिफला तुम्ही आलाय, कसं वाटतं तुम्हाला? 17व्या फिल्म फेस्टिवलसाठी मिफच्या या ठिकाणी आज उपस्थित राहताना जो उत्साह मी बघतो हा निश्चितपणाने ह्या शॉर्ट फिल्म असतील, डॉक्युमेंटरी असतील, एनिमेशन. हिंदी में भी बोलिए, इंटरनेशनल जा रहा है. 17 फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पे मैं आया हूँ. यहाँ का जो माहौल देख रहा हूँ, मिफ ने जो व्यवस्था की है बड़ी अच्छी व्यवस्था की है और यहाँ पे लगभग 36 कंट्री में से 360 डॉक्यूमेंट्री फिल्में, शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन यहाँ पे दिखाई जाएगी और इसके वजह से इंडियन फिल्म को एक नई टेक्नोलॉजी उसका भी यहाँ पे दर्शन होगा. और हमारे फिल्मों में तो हमारी फिल्म तो बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन और आगे बढ़ने के लिए इसका निश्चित तौर पर उपयोग होगा, ऐसा मुझे लगता है. बिल्कुल बिल्कुल. आप हमारे जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, ख़ास तौर पर जो गांव कूचे में, चूंकि आप पंचायती राज के डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो उन लोगों को क्या आप संदेश देंगे कि वो किस तरह से मैं चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है जी, ये गांधी जी के सपनों का गांव बनाना चाहते हैं जी. एक गांव ऐसा हो जी जिस गांव में रोजगार भी हो, जिस गांव का डेवलपमेंट इस तरह से हो कि वहाँ पे पानी हो, हेल्थ की सुविधा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले. ये सारी जो चीज़ें हैं जो यूनाइटेड नेशन में 147 देश एक साथ में आके इन्होंने डेवलपमेंट के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो चुने, जो 17 है, जिसमें से 9 गाँव के विकास के हैं. और मैं चाहूँगा कि हमारे जो युवा फिल्म मेकर है ये इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाए, लोगों को मोटिवेट करे कि उनके गाँव का विकास के लिए ये सस्टेनेबल गोल जो है वो अचीव करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए अगर फिल्में बनेगी तो निश्चित तौर पर हमारे गांव, जो गांधी जी की सोच थी कि गांव की ओर चलो, गांव का विकास होगा तो कोई शहर की ओर नहीं आएगा, यही सोच लेके हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं. और हमारा मंत्रालय हमारे मंत्री जी के मार्गदर्शन में यही अचीव करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं. तो मैं ये आज ये फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से हमारे देश के जो युवा फिल्म मेकर है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर अगर आप डॉक्यूमेंट्री बना के लोगों में ये लेके जाते हो तो निश्चित तौर पर इससे प्रेरणा मिलेगी, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और जल्द से जल्द गाँवों का विकास करने में उनको सहायता होगी. ये बहुत अच्छी सोच है और उम्मीद है सर हमारे दूरदर्शन के द्वारा, क्योंकि ये टेलीकास्ट हो रहा है लाइव और तकरीबन सभी यंगस्टर्स देखें. और हमारे बीच आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे बीच और भी डेलीगेट्स आए हैं, हम उनसे भी बातचीत करते रहेंगे जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं और क्या क्या फिल्में आने वाली हैं हम उनके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आज से इसका इनॉग्रेशन होना है और 4 जून तक आप फिल्में देखेंगे. और ये फिल्में
ये फिल्में फिल्म्स डिवीजन के प्रांगण में दिखाई जाएंगी, जहां पर विभिन्न थिएटर है, वहां पर मास्टर क्लास होगा, ओपन फोरम होगा, ये सारी मतलब बातचीत करें, थिंक अबाउट द फिल्म, बिकॉज फिल्म्स डोंट ओनली टिटिलेट यू, यानी जब आप फिल्म देखते हैं आपको कुछ करने का मन करता है, इट एक्साइट्स यू, इट फैंटासाइज यू एंड इट नर्चर्स you to a different world. And these are the cinema, these are the documentary film that people want to see. Documentary film, short film और an animation film. And ये प्लेटफॉर्म पर जो फिल्म्स डिवीजन के तहत 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, 17th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत आप सब देखेंगे, हर तरह की फिल्म देखेंगे, बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे बीच बातचीत करने के लिए एक बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी है। नाम बता दें आपको? ओके, नाम बता देते हैं, आप उनसे मिलवाते हैं। भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन श्री मुकेश शर्मा जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए यार। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, क्योंकि ओनली थिंग इज सबकी थोड़ा हम लोग गर्मी में कर रहे हैं, नॉर्मली फरवरी में ख़त्म कर देते थे। पैंडेमिक के बाद सबको इकट्ठा करना, एक वही एक्साइटमेंट लेकर आना, अपने आप में उनसे बातचीत करना, उन लोगों को कुछ करने का मौका देना था, इसलिए जब आयोजित किया। पर अच्छा है, इट्स वेरी नाइस, एटलीस्ट इस साल हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी जी। एंड सो मेनी पीपल वी हैव गैदर्ड। कितने लोग तो पुराने लोग मिल रहे हैं, पैंडेमिक के बाद से मुलाकात ही नहीं हुई थी, सब घरों में बंद थे अपने अपने। हाँ सर, आप स्वयं आजकल फिल्म्स बना रहे हैं कि क्या? मैं एक चैनल शुरू किया, कहानियों का अनोखा अंदाज, लोगों को थोड़ा सा जस्ट वैल्यू एजुकेशन वाली बात करता हूँ उसके थ्रू, कहानियाँ सुनाता रहता हूँ मैं लोगों को। दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग, नथिंग एल्स। और बाकी तो आई एम बिजी, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, वो भी है। जब आप स्वयं मिफ के साथ और दूरदर्शन के साथ जुड़े थे, तो किस तरह की फिल्में आई थी, और तब उस समय के फिल्म फेस्टिवल में और आज के फिल्म फेस्टिवल में, आज जो यहाँ पर हो रहा है, हम थोड़ी देर में इसका इनॉग्रेशन होगा, क्या डिफरेंस? अब पाएंगे डिफरेंस, अंदर जाने के बाद देखेंगे कि क्या नई फिल्में आई हैं। यहाँ पर जो नजारा दिख रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, और वो फिल्म फेस्टिवल का नजारा नॉर्मली हर जगह फिल्म फेस्टिवल के दौरान होता ही हो। बड़ी अच्छी बात है कि सारे फिल्म मेकर्स आते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं, और डॉक्यूमेंट्री, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री मूवमेंट को एक सहारा मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज तो फीचर फिल्मों के अलावा कुछ रहता नहीं देखने। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है कि मैंने अपने ज़माने में, अपने दौर में जैकी श्रॉफ को ला करके ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आपकी कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं दिख रहा है, पर एनीवे इट इज़ गुड कि कोविड का इतने सारे लोग आए तो हैं यहाँ पर। बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत सारी अच्छी बातें होती है, नई बातें होती हैं। तो आप दूसरा क्या, ये जो न्यू बडिंग फिल्म मेकर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या इवन एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर्स हैं, जिन्होंने बहुत बार अवार्ड विन किया है, और उन्हें किस तरह की फिल्म और आगे चल के वे बनाए, ये प्रेरणा देंगे? डॉक्यूमेंट्री इज नेवर, वी नेवर से दैट यू आर गोइंग टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री, यू लिव अ डॉक्यूमेंट्री। सो आज की तारीख में स्पेशली द यूथ इज कमिंग आउट विद सो मेनी गुड आइडियाज, और आज ही एक्चुअली कांस में एक डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड भी मिला है हमारे एक यंग फिल्म मेकर को, आज ही की न्यूज़ में सुबह देख रहा था। सो इट इज़ वेरी हार्टनिंग, एंड आई एम श्योर विद दिस यंग फिल्म मेकर्स अराउंड, हमसे तो कहते हैं ना कल और आएंगे हमसे बेहतर गाने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले, सो वी कैन सी दैट दैट इज हैपनिंग। यस, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। आई होप यू एंजॉय द फिल्म, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सीट्स भर रही हैं और हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुकेश शर्मा जी। और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आज नेहरू सेंटर में 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स और एनिमेशन फिल्म्स का इनॉग्रेशन हो रहा है। बहुत जल्दी पूरा हॉल खचाखच भर रहा है। इंतज़ार है तो हमारे मुख्य अतिथि का, लेकिन मुझे इंतज़ार है हमारे जूरी मेंबर्स का, हमारे डेलीगेट्स का, उनसे बात करने का। और इस वक्त मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच एक जापानीज डेलीगेशन के मेंबर हैं। वेलकम। Good evening. Namaste. Namaste. Good evening. Good evening. Welcome. Yeah. You all are looking so beautiful. Come here. Come closer. Yeah. Our camera is capturing you, and you all are looking. Are you a family, or are you a producer, director, actress? Tell me that. Yes. My name is Toshihiro Kaneko, Deputy Chief of Mission, Consulate General of Japan in Mumbai.
So I'm delighted to be here this evening to celebrate the 17th MIFF opening ceremony. So I would like to take their introduction too. Yes, Ma'am, yes. you introduce yourself. My name is Sayuri. I'm a wife of. The beautiful wife, isn't it? And she's a beautiful. Hello, my name is Raimi, and I'm their daughter. Yes, I was about to say the beautiful daughter. So देखा आपने कि कैसे एक पूरा Japanese delegation अपनी family के साथ आया है क्योंकि भरपूर उन्हें enjoy करना है Mumbai International Film Festival को. Sir, when you attend this film festival, what are your thoughts? Recently, our own Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji, had been to Japan and he got some good memories. He exchanged good thoughts. What is your thought? Yes. This year celebrates the 70th anniversary of Japan and India diplomatic relations. And our Prime Minister Kishida recently met the Prime Minister Modi, and we celebrate that anniversary. And tonight I heard that the MIFF kindly presents the Japan package of the collection of Japanese short films. It's really wonderful. And that was materialized by my friend Seigo Tono. So that is Subu Subu? Shabu Shabu, spirit, that's right. In the opening film, Japanese film हम दिखाने वाले हैं. Besides that, there will be a French film and a film from Sikkim. तो हम आप लोगों को सिक्किम की वादियों में लेके जाएंगे. But sir, आप उस film के बारे में, you were talking about that film, Japanese film. Yes, that's right. So there are, I think, 5 Japanese short films provided by the Shorts Asia Pacific International Film Festival in Japan. Then that festival also will start in the beginning of June. That's what coincided. Aren't you excited? Right. That's excited. Yes. So we would like to develop the more collaborations between Japanese and Indian films to the future. Thank you very much. Thank you. So, are you both also looking forward to see some wonderful films? Yes. Ma'am, you should be acting in the films. Oh, no, I can't. What do you do here? I work at home. Oh, So you live in India. yes, I do live And in ma'am, India. you are wearing the kimono, right? And it's so beautiful. Thank One day, next year, we would look forward to see you in sari, the Indian. Yes, that's wonderful too. Okay. Thank you so much. Thank you. Sit back, enjoy all the 7 days of the festival. Yeah, we will enjoy. Thank you. Yeah, Thank you. Arigato. Arigato. Sureshimasu. Thank you. एंड ये थे हमारे जापानीज डेलीगेशन जो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं और उनके चेहरे से ही झलक रहा था कि वो खूब एंजॉय करेंगे फिल्म फेस्टिवल में. मास्टर क्लासेस, ओपन फोरम्स और बहुत सारी बातें होंगी. एक दूसरे के साथ फिल्म मेकर्स बात करेंगे. लेकिन हमारे बीच इस वक्त फिल्म मेकर दी राहुल रवेल जी आ चुके हैं, तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और दूरदर्शन की तरफ से मैं नमस्कार करना चाहती हूँ. सर, यहाँ पर आइए. सर, आपको तो हम हमेशा, आपने बहुत अच्छी फिल्में तो बनाई हैं, लेकिन हमेशा फिल्म फेस्टिवल्स में आपको देखते रहते हैं. योर कंट्रीब्यूशन एंड योर थॉट्स फॉर मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022. It's a wonderful initiative. Yes. That they take every 2 years. Yes. And this must carry on more because short films is the call of today. Yes. And the children's section is something which is very important. So I'm very happy that this is being done. Yes, this is a biennial film festival that is happening for the young budding filmmakers and the established filmmakers who have made a plethora of work. So like आपने भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, plethora of work is there. What is your take on the films that were made, produced your time, and now since you're watching and you're being a part of the jury? See, times have changed. So obviously cinema will also change. And that is very important. Yes. The progress has to be there. Yes. So, when you're talking about the progress, I would say without money, nothing can be made.
एंड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल जो वृत्त चित्र होते हैं, जो सच्चाई को बयां करते हैं। एक फिल्म मेकर होता है, वो चाहे अपना मोबाइल उठा ले या अपना छोटा सा कैमरा उठा ले और लेकर चला जाता है। कोई थॉट्स नहीं होता कि मुझे क्या, एक सफ़ेद कैनवस होता है, तो वो सेलुलॉइड पर जब वो सोचता है तो वो कैसे वो कदम आगे बढ़ाए, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, हर चीज़ जो है, हर फिल्म जो बनेगी जी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जिबिट कैसे होगी। जी, इज इट फॉर द मोबाइल, जी, इज इट फॉर एन OTT, इज इट फॉर, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू शूट योर थिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट yes, टू लर्न। yes, sir. And what about the media? Since now the media is changing, पहले ये था कि हम बड़े थिएटर में जाकर फिल्म्स देखते थे, एंजॉय करते थे। धीरे धीरे टाइम आया कि लोग टेलीविजन पर देखने लग गए। अब तो लोग टेलीविजन पर भी नहीं देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। Accordingly, people have to change their way of making films. Yes, yes. According to that. So you think, is this we are proceeding in the right track, or we need to do something more? No, we are proceeding the right track. We need to educate ourselves about how the different formats work. Okay. Yeah. Okay. And the filmmakers who are trying to show. Sir, आप jury member हैं, so how difficult or how easy रहता है कि बहुत सारी फिल्में आती हैं और उसमें से बेस्ट को चूज करना और लोगों तक Very difficult. It's very difficult. It's not easy. आप लोगों की जो जूरी मेंबर्स होते हैं, एक दूसरे के साथ में तू मैं नहीं होती है, वो होती रहती है। अच्छा, तो किस तरह से आप उसको वर्कआउट करते हैं? मतलब आपका नहीं एक जनरली, क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है सर, बाहर जितने हमारे जो ऑडियंस हैं, जो देख रही है दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क पर देख रही है, दे नीड अ गाइडलाइंस कि इस तरह से अगर हम फिल्म बनाएं तो वो चूज होगी। There's no guideline. You have to make it, and then there's a jury which decides. Okay. Yeah. Okay. And message for the youth that they should continue making some good films. So be it Mumbai International Film Festival or be it any festivals. Yes, the youth should concentrate on content, which is most important, and I'm sure they will. Yes. Right. So you think the content plays the most important role. Absolutely. So what about the storyline? If you're talking about the story. That's a content. Yeah. Storyline is content. So, लेकिन आजकल की दुनिया में लोग ग्लैमर को स्टार कौन है या म्यूजिक डायरेक्टर कौन है उससे ज्यादा देखते हैं। Stars don't matter. It's the content that matters. Okay. That's very nice. Thank you so much. Thank you for the guidelines and for the message. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आते रहिए और हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, उस तरफ से जाइएगा। थैंक यू सो मच। और ये थे द फेमस लेजेंडरी फिल्म मेकर मिस्टर राहुल रवेल जी, और जो हमें बता रहे थे कि कंटेंट कितना इम्पॉर्टेंट होता है फिल्म मेकिंग के लिए। और हम आपको फिल्म मेकिंग के गुण तो नहीं सिखाएंगे, वो सिखाएगा मिफ। और मिफ 2022 में अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। बहुत खुशी की बात है कि मिफ इज़ गोइंग हाइब्रिड। लेडीज एंड जेंटलमैन आउट देयर जो हमारा ये टेलीकास्ट देख रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि मिफ अब आप घर में बैठे देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आप ऑनलाइन जाइए, रजिस्टर करिए, अपने आप को डेलीगेट बनिए और फिर जितनी भी चाहे मूवीज़ पिक्चर्स देख सकते हैं आप। क्यों? लेकिन यहाँ आने का फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर होगा मास्टर क्लास, और मास्टर क्लास में मेरे जहन में जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो रसल पुकुटी का। रसल पुकुटी मास्टर क्लास लेने वाले हैं, जो साउंड डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने स्लम डॉग, मिलेनियर, सांवरिया जैसी फिल्मों में काम किया है, अपना साउंड डायरेक्शन दिया है। वो साउंड के गुण आपको बताएंगे और उसके साथ पीसी सनत भी वर्कशॉप लेंगे, मास्टर क्लास उनके ऊपर होगा। वो लेंगे किस पर? विजुअल इफेक्ट पर। जब विजुअल इफेक्ट की बात आती है तो एक नाम जहन में आता है, वो है बाहुबली और रोबोट जैसी फिल्म। और इस फिल्म के ऊपर मतलब विजुअल इफेक्ट किस तरह से किया जाए, मतलब एक जादूगर होता है, वो अपने पेंडोरा बॉक्स से लेकर
किस तरह से फिल्में बनाता है विजुअल इफेक्ट्स से, इसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन ये पूरा जो 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि करता धरता है, जिनकी देख रेख में आयोजित हो रहा है, हमारे बीच है द फेस्टिवल डायरेक्टर श्री रविंद्र भाकर जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, वेलकम। थैंक यू मैम। टुडे यू आर द मोस्ट पर्सन इन डिमांड एंड आपके कंधे पे सबसे ज्यादा टेंशन है या नहीं, पहले ये बता दीजिए। नहीं मैम, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन। आई एम ग्लैड सो मेनी पीपल आर हियर, दे आर एंजॉयिंग, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द फेस्टिवल टू स्टार्ट। यस एंड सर, जब आपने ये औहदा लिया, आपने बहुत बहुत महकमों में काम किया है, बट व्हेन यू हैव कम टू द फिल्म्स थिंग, हाउ इजी और हाउ difficult was it? Because we are getting people after 2 years back on the same platform, although it's been organized biannually every year, but sir, because getting delegates internationally, it must be a Herculean task for you. Definitely, as you mentioned ki if you have a passion for something, yeah, then it becomes very easy to follow and very easy to deliver the day-to-day responsibilities. Right. So I am very much passionate about the films, our culture, our history. So it fascinates me. So and yes, it was difficult, but in spite of a slowdown in the pandemic, we have received a whooping response. We have received more than 808 entries for the films from 30 countries. Yes, So I which just is mentioned really that. an overwhelming response. Yes. So the people are, how eagerly they are waiting for this festival to happen. So among that 808 entries, सभी तो फिल्म आप नहीं दिखाएंगे तो कितनों का आप दिल तोड़ने वाले हैं, ये बताइए। देखिए, out of this 808 entries, 120 will be the competitive prism category, and in total, considering all the packages, we will be screening 380 films. So which is pretty good in number. Yes, that is a fantastic number, and I know I will not take much of your time, but just the last message. How last thing that I would like to ask you, how इस बार तो आपने आयोजित कर लिया है, लेकिन आगे के लिए अभी से आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये कमी रह गई तो मैं इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करूं। देखिए, there is every time a scope for improvement, Yes. and we try to deliver our best. And this time also we have done. We are introducing many new things. We are conducting this festival in a hybrid mode, so that people are able to see the movies on an online mode across the globe. They can entertain and get themselves entertained. That is. Plus, we have made the students entry free this time, which is a big thing. And Sir, I think it's a even big the children's films are. yeah, there is a world premiere of the Netflix Little Mighty Beam. And half a day we have kept. There is an animated Ramayana also which will be screened. So these are fascination for the young kids also. मतलब आप ट्रेडिशन को भी, जब एनिमेटेड रामायण दिखा रहे हैं तो ट्रेडिशन को भी साथ लेकर चल रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को उसको देखते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, India is a land of storytelling and we have grown up by listening stories from our grandparents also. Fantastic, fantastic. So we want to continue this, our history and legacy abroad. Ravindra Bhakarji, wish you all the best, and I know you're a very busy person at the helm of affairs. So thank you for joining us on Doordarshan and talking to our great audience out there. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And should I talk about the master classes? No, we have another personality amongst us. He's the Consul General of Italy, the beautiful country of Italy. So welcome and Namaste. sir, please, namaste, namaste. Sir, please, आपका नाम बताइए हमारे दूरदर्शन देखने वाले ऑडियंस को। This program is telecast live on Doordarshan National, Doordarshan International. Wow. So you can talk to your family out there in Italy if they are looking. And say hello. Yes, yes, hello. I'm so happy to be here. So Yes. happy. So please tell us your name. My name is Luigi. 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 I've got it right, Luigi. Yeah, that's the right pronunciation. Thank you, thank you. So your take on the film festival? Are you attending it for the first time? Yeah, this is my first time in India also. I arrived in May last year, but the festival wasn't there because, So we have it every 2 years. This festival is organized every 2 years. Every 2 That's years. why yeah. we didn't That's have why it I last- didn't. I wasn't. Yes. I wasn't there. Yeah, that's why this year. So you are just 1 year old in Mumbai, right? Yeah. Okay. Yeah. This is fantastic city. Fantastic people, especially. Yeah. And regarding the movies, this is the city of the movie, and I am
a super fan of film and Indian movies, and also, of course, Italian movies as okay, well. okay, super fan. So I must not miss this opportunity by asking him, who is your favorite actress? Actress. Yes. Indian actress. Indian actress. Indian. There are so many. There are so many. Okay. Too many. Madhuri Dixit? Deepika Padukone? Oh, okay, Deepika is. Okay. Yeah, she's Okay, beautiful. so what about the Indian heroes that you love? The Indian heroes. I mean, I'm very much into the contemporary Indian movies. I watch a lot of movies on Netflix. One of the ancient Indian movies that I really loved is Salam Mumbai. Salam Bombay. Salam Mumbai. Yes. Salam Mumbai was a very incredible movie That was from the Meera Nair's movie. Yes. That From is the a- 80s, 70s. Yes, that was the old movie. Yeah. But yes, the entire movie, the life of Mumbai, the tradition of Mumbai, the people of Mumbai was covered in that picture. Yeah, amazing. So that The that's, photography was great. The story was amazing. So could you understand? Do you know Hindi, sir? No, I'm You starting next week. I'm starting my first class of Hindi. Okay, Yeah, that is very good. Okay, next week you're starting. Yeah, on Monday. Maybe you could say namaste. I can say namaste. I can say dhanyavad or very basic thing. But I will learn how to ये तो speak properly. ये तो शुरुआत हुई है and अच्छी शुरुआत हुई है. It's a nice beginning. So I hope you watch many movies and also learn the Indian culture. Yes, that's something that I will do. And Because Indian culture, in the sense, India, Italy, India, the name goes so close. but we have many good things in common. Yes. Yes. First of all, food. You guys love food. I think as much as we Italian love food. So we love food, but we love very spicy I know food. that. I know that. And you know, love spicy food. first day I arrived in India was 7 in the morning. I went to the hotel and I ordered for a tea. So the waiter brought me a cup of tea, and this tea was brown, with milk. Okay. And it was okay. I didn't order for it, but it's fine. Let's try. And the tea was spicy. And I said, come on, even the tea is spicy here in India. And then it was masala chai, And now I love to drink masala chai with ban maska. I must just mention, although it's offhand, these spices that must be put in the tea you must have felt those spices. But it is because of these spices which helped us overcome the pandemic, let me tell you. Yeah. We were safe because of the spices, Indian spices. Oh, we love them. I love them too now. You will also start, yes. So I hope you sit back and enjoy each and every movie. Yeah. You attend all the master classes. Thank you so much. Thank you very much for having talking to our viewers out there. And I must say they must have thoroughly enjoyed it talking to you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. दोस्तों हमारा ये इनॉग्रल सेरेमनी जो है हम नेहरू सेंटर में है और बहुत थोड़ी ही देर में शुरू होगा, जल्द शुरू होगा. बहुत ही एक्साइटमेंट यहाँ पर हो रही है. सब जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पर. आज हमारे चीफ गेस्ट आएंगे, फिर कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे और उसके बाद ओपनिंग फिल्म भी दिखाई जाएगी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ. और फिर कल से पूरे दिन आप लोग एक से बढ़कर एक फिल्में देखेंगे, उसको खूब एंजॉयेंगे करेंगे. इतने में हमारा जो नेहरू सेंटर है खचाखच भर चुका है, पैर रखने की जगह नहीं है. इसलिए मैं आपको अभी इनवाइट नहीं करूंगी. आप अपने घर में हैं वहीं से देखिए, खूब एंजॉय करिए, लेकिन फिल्में वहां से मत देखिए. अगर आप नहीं आ सकते हैं, बॉम्बे के बाहर हैं, तो हाइब्रिड मोड पर फिल्में देखिए और एंजॉय करिएगा. लेकिन हमारे बीच इस वक्त एंजॉय करने आ रही हैं श्रीमती उषा देशपांडे जी, जो IDPA से कनेक्टेड रही हैं. मैम नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि IDPA की तरफ से भी बेस्ट डेब्यू फिल्म का अवार्ड दिया जाना है और आप उससे कनेक्टेड हैं. वहाँ पर भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स साथ में रहे हैं, पैनल में रहे हैं. आपका क्या टेक है? देखिए, खासकर ये जो MIFF हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है, जो फिल्म डिवीज़न की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है.
तो एज अ फिल्म मेकर, एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, मुझे लगता है कि ये जिस तरह कुंभ मेला होता है, तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स के लिए कुंभ मेले से कम नहीं है। वो ये वही अहमियत रखता है जैसे कुंभ मेला होता है। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा स्टेज है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि अपनी कला, अपना क्रिएशन दिखा सकते हैं। और ये हम चाहते हैं कि आगे सालों में भी ऐसे ही चलता रहे। जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ये ट्रेडिशन जो है वो चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये ट्रेडिशन पिछले 32 साल से चली आ रही है। तभी हम जाकर पहुंचे हैं 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म समारोह में। फिल्म्स डिवीज़न के तहत जो 1948 में फिल्म्स डिवीज़न की स्थापना की गई थी, और तब से लेकर अभी तक 9000 से भी ज़्यादा फिल्में मैडम बन चुकी हैं, निर्माण हो चुका है। और फिल्म्स डिवीज़न, मैं एक बात बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को, आप खड़ी हैं इसलिए ज़रा फ़ायदा ले रही हूँ आप भी, कि फिल्म्स डिवीज़न में सिर्फ फिल्मों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन फिल्मों को रिस्टोर भी किया जाता है। और किस तरह से आजकल, क्योंकि डिजिटाइज का ज़माना है, तो उसका रेस्टोरेशन शायद काफ़ी इजी हो गया होगा, और उसे रिस्टोर करते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताने के लिए कि कल क्या गुजरा है और आने वाले कल में क्या कुछ घटित होगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ये कहते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए ना उसकी आइडेंटिटी जो होती है, उसका जो वजूद होता है, वो उसकी संस्कृति होती है, उसका इतिहास होता है। तो हमारे देश का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, उसको संभाल के रखने का बहुत बड़ा काम फिल्म डिवीज़न ने किया है। मतलब आज अगर हम जानना चाहें कि हमारे जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, तो उनके फोक आर्ट्स क्या है, उनके म्यूज़िक क्या है, या हम जानना चाहें कि 1947 में, 1950s में जो भी हमारे देश में हुआ है, ये सब कुछ अगर हमें जानना है, या हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, तो हमें फिल्म्स डिवीज़न के पास ही आना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा इतिहास अगर जानना है तो फिल्म्स डिवीज़न जैसे बेहतरीन जगह आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये इतिहास से, चाहे वो शख्स हो चाहे वो शख्सियत हो, जब हम इतिहास को देखते हैं, हम उन्हें जान पाते हैं कि वो कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या काम किया, हमारा शहर कैसा था, हमारी क्या क्या घटनाएं घटित हुई, और हमारी संस्कृति भी, बहुत सारी परंपरा ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ बदल जाती है या फेड आउट हो जाती है। तो उनका भी नॉलेज अगर हमें लेना है, तो हमें फिल्म्स डिवीज़न की फिल्में देखनी पड़ती है। और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स का जो काम है कि हम आपकी जो ज़िंदगी है उसी का चित्रण करते हैं। जैसे फीचर फिल्म में अगर देखा जाए तो आप सत्य से लेके सपने की तरफ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री में आप सपने की तरफ से सत्य में आते हैं। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप फिल्में बनाती रहे, लोगों तक पहुंचाती रहे। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, इंतजार हो रहा है हमारे मुख्य अतिथि सर, मुख्य अतिथि हमारे आ चुके हैं, आदरणीय माननीय पीयूष गोयल जी, जो बिल्कुल फर्राटे से बिल्कुल अंदर चले गए हैं, और बस कुछ ही पलों में इंतजार होगा हमारे आज का अनावरण का, लोकार्पण का, फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग की। लेकिन उतनी देर में हम बात करना चाहेंगे अनदर डेलीगेट। जब तक वो आए हम आपको बता दें, हम आइए अब हम अंदर चलें कि हमारे इनॉग्रेशन में क्या कुछ होने वाला है। थैंक यू, फिर मिलते हैं, एंजॉय करिए।
filmmaker? Pardon me? दोस्तों आइए हम एक और डेलीगेट से आपकी मुलाकात करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा ओवरसीज से बहुत सारे गेस्ट हमें जुड़ रहे हैं, हमारे साथ का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर आए, फिल्म्स देखें. दे ऑल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल एंड वी हैव अ डेलीगेट फ्रॉम Argentina, but we will talk to him later because the inauguration has to happen. For the evening, and it's my pleasure and privilege to welcome all of you to the 17th edition of Mumbai International Film Festival for documentary, short fiction and animation films. And today our inaugural ceremony is watched live by many on DD National, DD Sayadari and many other channels as we speak. But before we begin, I'll request all of you to please put your phone on silent mode. Thank you so much. We would initiate our evening with the national anthem. Now may I request all of you to stand up for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. Thank you everyone. It's an absolute delight to welcome all the respected dignitaries, diplomats, senior officials, jury and selection committee members, filmmakers from India and abroad. Also a warm welcome to all the media students, journalists and film lovers present here for this much awaited inaugural ceremony of 17th Mumbai International Film Festival 2022 at this wonderful venue, Nehru Center, Mumbai. We have a very exciting evening planned ahead of us. There is an audio-visual journey of MIFF from 1990 to 2022, a unique cultural performance, Azadi Ka Amrit Mahotsav, commemorating 75 years of Indian independence, and presentation of the prestigious Dr. V. Shantaram Lifetime Achievement Award and screening of the opening films. The momentous inaugural will set the tone of the festival, and I thank all of you once again for being here. Organized by the Films Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Mumbai International Film Festival is one of the oldest, largest and most sought after festival for documentary, short fiction and animation films in South Asia. MIFF brings a lot of valuable content for filmmakers and cineastas. Over the next 6 days, we will not only get to watch some of the finest films in competition in other sections, but also get an opportunity to meet and engage with eminent film personalities through masterclasses, workshops, interactive sessions, open forums, lecture demonstrations on crucial aspects of cinema and filmmaking. The MIFF 2022 will also have a number of special attractions, such as special packages of films from different countries, homages, retrospectives of eminent filmmakers, and student films. This edition has a country focus on Bangladesh. We are celebrating 50 years of friendship between India and Bangladesh. The screenings and other sessions will be held at the Films Division premises located at Pedder Road.
We are very proud to announce that MIFF 2022 has received a record number of 800 film entries from more than 30 countries across the world. This year, we have 650 films in the national competition and 158 films in the international competition from more than 30 countries. Also, this year, MIFF has gone digital. Films in competition and print section will also be streamed online. Now, may I please request our host, the festival director, Shri Ravinder Bhakarji, to escort our esteemed guests onto the stage, please. Joining us, our chief guest, the Honorable Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textile, Shri Piyush Goyal ji. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. मैं नाम बोल देती हूँ सर सबको. Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. L. Murugan ji. Guests of honor, Shri Ramdas Athavale, Honorable Minister of State for Social Justice and Empowerment. Shri Kapil Moreshwar Patil, Honorable Minister of State for Panchayati Raj. The eminent filmmaker, Shri Shaji Karunji. The Additional Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Ms. Neerja Shekharji. And the host for the entire festival, the festival director, Shri Ravinder Bhakarji, the man who wears one hat but shoulders many responsibilities. He is the Director General, Films Division, Managing Director, National Film Development Corporation, Director, National Film Archives of India, CEO, Children's Film Society of India, and CEO, Central Board of Film Certification. May I now request Additional Secretary Ms. Neerja Shekharji to welcome our Chief Guest, Honorable Union Minister Shri Piyush Goyal ji. And Honorable State Minister Dr. L. Murugan ji. Thank you so much, ma'am. May I request our host, Shri Ravinder Bhakarji, Director MIFF, to welcome our guest of honor with flowers. Honorable Minister of State, Shri Ramdas Athavale ji. Honorable Minister of State, Shri Kapil Moreshwar Patil ji. The eminent filmmaker Shri Shaji Karunji. Thank you so much, sir. At the onset, let's invoke the energy of Goddess of Knowledge by lighting the lamp. Bhakar sir ji, requesting you to please help our dignitaries to make their way to the lamp, and also request Shri Sanskar Desai ji, General Secretary IDPA, to please join us on stage. The pandemic has taken us through some dark moments. Let's make this light symbolize goodness, better days, and progress.
light of gratitude that has been bestowed on us. It's the light of love in our hearts, the light of abundance, and the light of compassion to serve others. Thank you all. Thank you so much. Now may I request the festival director and MIFF host, Shri Ravindra Bhakarji, to formally welcome this august gathering. Thank you, sir. Good evening all. A very warm namaste. I heartily welcome our chief guest, Honorable Union Minister Shri Piyush Goyal, Honorable Minister of State Shri L. Murugan, Honorable Minister of State Shri Ramdas Athavale ji, Honorable Minister of State Shri Kapil Patil, eminent film personality Shri Saji Karun, Additional Secretary Mrs. Nirja Sekar from Ministry of Information and Broadcasting, all the distinguished jury members, the members of media, the filmmakers, the film delegates, and all my friends from other media units. I heartily welcome you to this 17th edition of Mumbai International Film Festival, which is starting from today and the closing ceremony will be on the 4th of June. Before talking more about MIFF, I would briefly like to mention about India's robust growth in the media and entertainment sector, which grew more than 16%, rising up to INR 1.6 trillion. In fact, 46% of the OTT originals and the 69% of the films released on OTT are from the regional cinema. Now, the good stories are not bound by the star cast. And in this scenario, the documentaries, short film and animations are gaining prominence. The world is recognizing the excellence of India in the media and entertainment sector, be it the rich heritage of storytelling, be it the skilled manpower, be it the world-class post-production facilities available with us. The world is, in fact, anxious to do business with us. Film are both business and industry. And we cannot think better than the name of our young and dynamic Commerce and Industry Minister, Shri Piyush Goyal, as our chief guest. And I am very fortunate, in fact, I have worked under him as an CPR and secretary when I was with Western Railway. I know him to a person who doesn't take the things on the face value. He goes into the root of the things and make them happen. Thank you, sir, for accepting our invitation, and we heartily welcome you. This festival could not have been possible without the blessings of our young and go-getter, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Shri Anurag Thakur, who because of some prior engagement could not physically make here, but he has sent a video message which will be played after this. Along with him, our dynamic Minister of State, Shri L. Murugan, they both put India at the center stage recently at Cannes by a well-planned, systematic, in fact, strategic marketing thrust and declared India as a country of honor at the Mashudu Festival Cannes. Where because of this, we were not able to only showcase our talents, the startups, the budding filmmakers, and they got a huge international platforms. It was a really big achievement. In fact, the government has recognized audiovisual sector as one of the 12 champion sector schemes. And going by this trend, we have tried to shape up the MIFF this time to create a level playing field for all the international filmmakers as well as the domestic filmmakers. There was a long pending demand from the filmmakers that there should be a kind of market for the documentaries film. So this time we have created a B2B hub where the documentary filmmakers, in association with various international platforms like Amazon, Docubay, Mubi, Pocket Films, so they can coordinate with them, they can have a commercial dealing with them, they can find a market for their films. Along with that, my MC has already mentioned you about the salient features of this festival. This time we will be keeping a world premiere of the Netflix Little Mighty Bheem, the restored classic documentary of literary Satyajit Ray, Sukumar Ray. In fact, I will be glad to announce that Government of India very recently sanctioned a world's biggest
films restoration project under the National Film Heritage Mission, amounting more than 600 crore, in which in the next 3 years more than 2,000 films will be restored and 5,000 films will be digitized. So it's a big project. And all the eminent filmmakers, they have a dream that the audience should be able to see the film in the original content. So in the next few years, all these audience will be immensely benefited by this restoration process. This time, this festival is being organized in a hybrid mode so that across the world, people can see the screening of the wonderful documentaries. The students are made free, their entries are made free this time, so that they can choose films as an option, as a career option, and they can get the desired exposure. We have decided to keep Bangladesh as a country of focus this time. We are celebrating our 75 years of independence, and Bangladesh is 50 years of liberation war. We have kept a special package of 13 films from Bangladesh. More than 380 films will be screened during the festival period. And it is again important to mention, at Cannes our Honorable Minister announced the film incentives for the audiovisual co-productions and for the film shoots of the international makers. They were a long-awaited incentives, and 30% of the cost will be reimbursement subjected to a maximum of 2 CR and USD 2,60,000. And in fact, in addition to that, you can get another 50 lakhs if you employ 15% of the manpower from India. These are being very well taken by the international community of the filmmakers. They are effective from 1st of April. They are valid for the feature films as well as the documentaries, about 30 minutes. However, the necessary approvals has to be taken by the documentary filmmakers from Ministry of External Affairs. Mumbai International Film Festival has got a whooping response with more than 108 entries from 30 countries. In spite of the COVID slowdown, the response is overwhelming. So the film cinephiles and the cinema lovers would be able to enjoy all these documentaries. So I invite you all to be a part of this festival. Let's be a part of MIFF, which is a true reflection of realities, and enjoy the diversities through the wonderful documentaries. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, Bhakar sir. That was very encouraging, and you have shown us that the show not only must go on, but it must go on seamlessly and well. Thank you so much. Our Honorable Union Minister of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakurji, could not be a part of this ceremony today because of previous engagement, and he has sent us a video message. Let's listen in. नमस्कार। भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के प्रिय फिल्म निर्मातागण एवं सिनेमा प्रेमी, मैं वृत्तचित्र, लघु एवं एनिमेशन फिल्मों के 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मिफ दरअसल दक्षिण एशिया में गैर फीचर फिल्मों के लिए सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है। MIFF, जिसका शुभारंभ वर्ष 1990 में हुआ और जो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये दुनिया भर के वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओं को एक दूसरे से भेंट करने, विचारों का आदान प्रदान करने, वृत्तचित्र, लघु एवं एनिमेशन फिल्मों के सह निर्माण व विपणन की संभावनाओं का पता लगाने और विश्व सिनेमा की तुलना में फिल्म निर्माताओं के विजन को व्यापक बनाने के लिए एक उपयुक्त मंच और प्लेटफॉर्म है। वृत्तचित्र सिनेमा ही दुनिया पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वृत्तचित्र सिनेमा न केवल समाज में व्यापक बदलाव लाने की शिक्षा एवं प्रेरणा देता है एवं इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि एक ऐसे माध्यम के रूप में भी कार्य करता है जो संस्कृतियों और सीमाओं के भी पार जाकर वहां भी अपना व्यापक प्रभाव डालता है।
मैं 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए कैबिनेट के अपने वरिष्ठ सहयोगी बड़े भाई आदरणीय पीयूष गोयल जी का, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। डॉक्टर एल मुरुगन, जो सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय रेल राज्य मंत्री आदरणीय रावत साहेब दानवे पाटिल जी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले जी एवं माननीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, माननीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ जी, प्रख्यात फिल्म निर्माता श्री शाजी करुण जी, सचिव सूचना प्रसारण विभाग कपूर चंद्रा जी और अन्य जो हमारे यहाँ पर अतिथि आए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन भी करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, आज व्यक्तिगत रूप से आप सबके बीच में नहीं हो सका, जिसका मुझे खेद भी है, लेकिन MIFF सप्ताह में आपको न केवल प्रतिस्पर्धा व अन्य वर्ग में कुछ बेहतरीन फिल्में देखने को मिलेंगी, बल्कि सिनेमा और फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी मास्टर क्लास, कार्यशालाओं, आपस में संवाद सत्रों और खुले मंच और व्याख्यान प्रदर्शन के माध्यम से प्रमुख फिल्म हस्तियों से मिलने और उनसे जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आदरणीय पीयूष जी, आपके अनुभव से फिल्म जगत को भी और मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों को भी, और जो आज यहाँ पर सब मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जुड़ने आए हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने का और आपके अनुभव से बहुत कुछ जानने का अवसर भी मिलेगा। एक बार फिर पीयूष गोयल जी का और सभी माननीय मंत्रियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। Since its inception in 1990, MIFF's journey has been phenomenal. Instead of resting on its laurels, MIFF has been setting higher goals for itself and surpassing them each time. Let us get some key moments in this journey. The Indian documentary film is finally receiving the recognition it richly deserves. Logo of an eye. I look at everybody from the eyes of friendship. Just totally delighted to be here in Bombay. I find the people so very warm, and the festival is fantastic. Enjoy the festival very much, to meet people, you know, to have the whole world here. The important thing about documentaries and documentary festivals is that it allows a kind of interchange of people and ideas and emotions and films too, but it's the kind of co-productions that we can do with our hearts and our minds and our eyes that really makes festivals important. Mumbai International Film Festival, where I've seen some amazing documentaries, the programming, and short films.
because it's an international film festival, you have films that come from different parts of the world. And that itself is good enough for people to measure their own work. This festival is amazing in raising awareness of what is happening both in India and around the world. Mumbai International Film Festival has given an opportunity for all the filmmaking students to screen their films. आपकी फिल्मों के माध्यम से हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा नेचर, हमारा फ्यूचर, इस सब पर यदि आपने ध्यान दिया, संस्कारी, वैल्यू बेस्ड, उस दिशा में यदि आप लोग चलेंगे तो बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होगा. I'm very happy to announce that our guest of honor, Shri Rao Sahib Patil Danbeji, Honorable Minister of State for Railways, Coal and Mines, is here with us. And also, I would like to welcome Dr. Bhagwat Kishan Rao Karar, Honorable Minister of State for Ministry of Finance. Welcome, sir. Can I please request Bhakar ji to please welcome both of them. नाथा भाऊ, अहो शासनाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेचे लाभार्थी झाल्याबद्दल अभिनंदन. अहो धन्यवाद नानू शेठ. अहो मग कधी घेताय घर बांधायला? अहो उद्या सुरुवात करतोय. हा काय निघालं बांधकामाचं साहित्य आणायला बाजारला. अरे ये आणि कशाला? बांधकामाचं साहित्य आणण्यासाठी वेगवेगळ्या दुकानात जावं लागेल. घरी परतायला वेळ लागेल आपल्याला. अगे याची काय बी गरज नाही बघ आता. घरकुल मार्ट आहे ना. घरकुल मार्ट? हो घरकुल मार्ट. महाराष्ट्र शासनाने महिला बचत गटाच्या माध्यमातून बांधकामाचं साहित्य वाजवी दरात मिळण्यासाठी सर्वत्र घरकुल मार्टची स्थापना केली. चला तर मग घरकुल मार्टला. घरकुल मार्ट महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम. महाआवास अभियान ग्रामीण महाराष्ट्र शासनाचा एकच ध्यास 2022 पर्यंत सर्वांसाठी आवास. Bhagwan Kararji, eminent filmmaker Sri Saji Karanji, Additional Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Srimadi Niraja Sagarji, Director, MIFF and DG Films, Division Sri Ravinder Bagarji, filmmakers, juries, award winners, film viewers, senior government officials, dignitaries, friends, media, ladies and gentlemen, namaste, vanakkam to you all. It is my honor to be here in Mumbai International Film Festival in this great land of Maharashtra. This is the land of our icon Chhatrapati Shivaji Maharaj, who showed to the world how an ideal king should be. This is the land which taught what real humanism is through the teaching of Mahatma Phule, Chhatrapati Shahu Maharaj and Dr. Bhimrao Ambedkar ji. This is the birthplace of Indian cinema and movie making.
This is the land which gave us Dada Sahib Phalke, V. Santaram, Lata Mangeshkar, and so many other great personalities from the cinema industry. महाराष्ट्र से पवित्र भूमि में आपले स्वागत करतो. Welcome to the 17th edition of Mumbai International Film Festival. This is the one of the world famous, oldest film festival showcasing non-feature films in India. Friends, movie making is an art, it is a science, it is a commerce, and it is a business too. Like a sponge, a sensitive filmmaker observes the emotions, images, and interactions from the space and time she lives in, and she applies her consciences, values, and visions to it, and returns to the society in the form of great piece of art. In doing so, a brilliant filmmaker uses the movie as a medium of effective expression of her views, and at the same time educate the viewers, shape their taste, and sharpen their sensitivity too. MIFF 2022 is here to showcase such short fictions, such short films, animation films, and documentary films. You will have choose to 400 films being honored here over next few days. Ramayana, the first ever animation film co-produced by India and Japan, the world premiere of Netflix OTT series, The Mighty Little Beam, and many such gems will be showcased here. And already our director told that Bangladesh is chosen as the country of focus in MIFF 2022. The stalwart of movies making like Rasul Pukati and others will take a master classes and workshop also. Friends, in movies are integral part of our life. Movie making is an important activity, and our government under the dynamic leader Sri Narendra Modi ji, our Prime Minister Sri Narendra Modi ji, has initiated many reforms in last 8 years in the film sector. Seva, Susasan, and Garib Kalyan has been the hallmark of our Modi ji's leadership. Ease of doing business is the key of governance. This is how a film facilitation office translates itself a single window of facilitation for all film-related queries and film-related permissions in the one place itself. Our government has recently announced initiatives for the co-production of films with Indian filmmakers and also for shooting of films in India. In the Azadi Ka Amrut Mahotsav, for the first time, 75 talented filmmakers were given opportunity at IFFI Goa to interact with the eminent global film producers and filmmakers. Thanks to our Honorable Commerce and Industrial Minister Sri Piyush Goyal ji's guidance and our Prime Minister's guidance, Information and Broadcasting Minister Sri Honorable Anurag Singh Thakur's effort, government is supporting the audio-visual service as a champion service sector. The AVGC sector is getting a big push in the movie making. Art and audio-visual technology is happening in a great way. You know, we have a talent, human resources, and technology also. That's why our government is giving very important in this AVG sector, post-production sector. Friends, our Prime Minister Sri Narendra Modi ji has called for Digital India and Startup India. Our Startup India has created a vibrant startup ecosystem in India. Even in this year, Cannes Film Festival in France, India startups have made their presence felt. It is a leadership of Narendra Modi ji only that has seen India became the first ever country of honor at Cannes Festival. The Indian contingent showcased
the ethos and culture of India at this reputed international platform. The vocal for local spirit has translated the local into global. Recently, yesterday, the last day was in the Cannes Film Festival. Our Indian documentary film producer Sean Sen has won a Golden Eye Award at Cannes Film Festival. And also in that Cannes Festival, India has country of the honor. India has got the country of honor, and we are also having India is potential, and India become the content hub of the world in that festival and now itself also. The world has numerous examples of great films and talented filmmakers emerging out of such film festivals and breaking into a big league of movie making, and I am confident that MIFF 2022 will also have its share of glory in producing such gems. There is many more for you here. I welcome you all to enjoy the immerse in the Mumbai International Film Festival 2022. I thank Honorable Minister Sri Piyush Goyal ji for gracing this occasion as a chief guest for his very busy schedule. Yesterday only he came from London. Immediately today he is here. I thank you, sir. And also I appreciate the gesture of our Minister Sri Rao Sahib Danve Patel ji, Sri Ramdas Atwale ji, Sri Kapil Patel ji, Sri Bhagat Karat ji for inspiring the valuable time for this event. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. That was very encouraging. Thank you very much. It's now time to felicitate those who have added sheen to MIFF by accepting our invitation. I'm talking about our eminent jury members. Our jury this year is a passionate set of individuals who have handled the tough job of selecting the best films. I shall now call upon them individually to be escorted on the stage, requesting you all to be on the stage until all the members are felicitated. We shall begin with the international jury before we go on to the national jury. I request Honorable Minister of State Sri Rao Sahib Patil Danve ji and Honorable Minister of State Sri Ramdas Atwale ji to do the honors for Jury International. First, Mr. S. Nalamuthu from India. Mr. Anant Vijay from India. Ms. Meena Rad from France. Ms. Meena Rad from France. Mr. Jean-Pierre Serre from France.
Mr. Dan Wallman from Israel. Thank you. Now may I request all of you to please come up on the stage for a photo opportunity. सेंटर में आ जाए. Now I'll request Honorable Minister of State Shri Kapil Moreshwar Patil ji and Honorable Minister of State Dr. Bhagwat Kishan Rao Karar to do the honors. The first one I'd like to invite on the stage is Mr. Sanjeet Narvekar ji from India. Mr. Subhas Sehgal ji from India. Ms. Jayashree Bhattacharya from India. Mr. Ashley Ratna Vibhushana from Sri Lanka. Mr. Tariq Ahmed ji from Bangladesh. Thank you so much. May I now request all of you to please come in the center of the stage for a photo opportunity, please. Thank you so much. Now we move on to the highlight of the evening, Dr. V. Shantaram Lifetime Achievement Award. I request Honorable Minister of State Dr. L. Murugan to announce the award. Sir.
The winner of the Dr. V. Sandaram Lifetime Achievement Award at MIFF 2022 is the very dynamic, very prolific, very creative and passionate filmmaker who has made documentary the basis of all his storytelling. The Dr. V. Sandaram Lifetime Achievement Award for MIFF 2020 goes to Sanjeet Narvekar. Shri Sanjeet Narvekar ji is being conferred with Dr. V. Shantaram Lifetime Achievement of an unfailingly inspiring body of work on the film sector, especially on the film history and documentary film movement. Can we again give it up for him? Donning multiple hats as an insightful film historian, a prolific author, as well as dexterous editor and filmmaker, Shri Narvekar ji has rendered a seminal contribution to uplifting of good cinema and fine art, and of the documentary film movement in particular. Through his lifelong and passionate engagement with the past, the present and the future of films, Shri Narvekar ji has touched many a heart, stirred many a soul and ignited many a minds towards the good, the great and the beautiful. Winner of National Award for Best Book on Cinema in 1996, Shri Narvekar ji's passion for film history has manifested in writing and editing more than 20 books on cinema, including Marathi cinema in retrospect, which won him the Swarn Kamal. He is credited with directing Films Division's The Pioneering Spirit, Dr. V. Shantaram's biopic of this legendary filmmaker, and writing and directing a number of documentaries on various subjects. He has been a part of the selection committee and has also served as jury members of many national and international film festivals, including the National Award Jury for Writing on Cinema. The jury is delighted and privileged to recommend this prestigious award in humble recognition of Shri Narvekar's thorough leadership, mentorship, and his life dedicated to the immaculate beauty of fine art, for gifting us new eyes to see, understand, and manifest this beauty in ourselves and in each other. Can we please have the visual compilation of Mr. Narvekar's achievement? Book on cinema of 1995 is given to Marathi cinema in retrospect by Sanjeet Narvekar. Sanjeet Narvekar is a truly valuable asset for the documentary space in India. उन्होंने न केवल अच्छी फिल्में बनाकर नाम अर्जित किया है, बल्कि अलग अलग विधाओं में काम करके एक शाश्वत योगदान दिया है हमारी डॉक्यूमेंट्रीज को. He is a filmmaker, he is a writer, he is an author, he is an academician, he is an archiver, he is a historian. He has written so many books, he has done so much research on a documentary on Indian cinema. Wonderful thing. Particularly the culture where so much has happened and you just gloss over it. And he has actually documented it, preserved it, published books on them. And in all these areas, his work is out of the ordinary. I am happy that this year the contribution of Mr. Narvekar will be the history and will be in the MIFF festival. He truly deserves to be honored. Congratulations, Sanjeet Narvekar. Can I please request someone to please escort him on the stage?
Now I request our respected Chief Guest, Shri Piyush Goyal ji, and Honorable Minister of State, Dr. L. Murugan ji, to present the awardee with a shawl, a certificate, golden conch, and a cash prize of rupees 10 lakh. And I also request Dr. Kiran Shantaram ji to please come up on the stage and join them. Congratulations, sir. We can't let you go like this. Please share your thoughts with us on this happy moment. Sir, please. Two minutes, not more. I'm sure you all want to. Anyway, as usual, okay. Yeah. Noted dignitaries on the dais, dignitaries in the audience, and my fellow documentarians. It is always very gratifying to get an award in the name of the person you have revered all your life, whose films you have studied, analyzed, spoken about, and I'm talking of Dr. V. Shantaram. I'm also delighted to have the friendship of his son, Mr. Kiran Shantaram, who has been like an elder brother for me in the last 20-25 years that I have been working. More than that, actually, 50 years, but then that will reveal my age. I would also like to thank Mr. Vijay B. Chandra, who brought me into the documentary realm. I was a pakka Bollywood chap till he introduced me to the delights of the documentary. I thank Mr. Prem Vaidya, NVK Murthy, and the hundreds, Girish Vaidya, so many filmmakers at Films Division who introduced me to the intricacies, the nuances of what documentary movement is. I would also like to thank Mr. Jagmohan, who was the first recorder of in the history of not only Films Division but also the Indian Documentary Producers Association, the documentary movement as such. I would also like to thank all the people in Films Division, right down to the humble office boys, who went out of their way, took out dusty files, took out dusty books, so that I could research, I could write my history based on the actual material that was available. So a very big thank you to all of them. And finally, but not the least, I would like to thank my wife, who has tolerated all my idiosyncrasies, who has allowed me to do, without complaint, allowed me to do whatever I wanted to do. So this achievement is as much hers as it is mine. Thank you very much. Thank you, sir. Congratulations once again.
Now I will request Honorable Minister of State Shri Rao Sahib Patil Danveji to please share your thoughts with us. मी मराठीत बोलतो, चालेल ना? आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आणि भारत सरकारचे आमचे ज्येष्ठ मंत्री पीयूषजी गोयल साहेब, ज्यांनी मुद्दामून या ठिकाणी आज हा कार्यक्रम मुंबईमध्ये ठेवला, ते आमचे मंत्रिमंडळातील सहकारी मुरुगनजी, शीघ्र कवी ज्यांचं भाषण आपल्याला अजून ऐकायचं आहे, ते आमचे रामदास आठवलेजी, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी कपिल पाटीलजी, आमचे दुसरे सहकारी डॉक्टर भागवत कराडजी, मंचावर उपस्थित असलेले आमचे अन्य सर्व सहकारी आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सर्व मुंबईकर नागरिक बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी नार्वेकरांचं स्वागत करतो की त्यांनी एवढ्या अथक प्रयत्नाने आणि एवढं वर्ष या क्षेत्रामध्ये काम करून आपण एक आज पुरस्कार मिळवला आणि या वयातही आपण आपल्या पत्नीचा उच्चार या ठिकाणी केला, याचा मला स्वतःला अभिमान आहे. कारण कोणत्या तरी पुरुषाच्या पाठीमागं आपली घरातली गृहिणी असते, तेव्हाच आपण मोकळेपणानं काम करू शकतो, हे त्यांनी आज या ठिकाणी दाखवून दिलं. मित्रो, ज्या क्षेत्रामध्ये आम्ही काम करतो ते क्षेत्र आमचं, आणि ज्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही काम करता किंवा रुची दाखवता त्या क्षेत्रामध्ये खूप मोठा फरक आहे. आपण लोकांनी फिल्ममध्ये काम केलं, कोणी डायरेक्टर झालं, कोणी लिखाण केलं. आम्ही लोक तर त्या ठिकाणी जन्माला आलो की ज्या ठिकाणी पिक्चरच्या टाकीजवळ 80 पैसे घेऊन लाईनमध्ये उभं राहून तिकीट मोठ्या मुश्किलनं आज मिळतं की नाही, ही वाट पाहणारी आम्ही एकेकाळची माणसं. आणि आज आमच्यासारख्याच्या हातानं तुम्हाला या ठिकाणी पुरस्कार दिला जातो. खरं तर आमचं भाग्य आहे आणि याला केवळ एकच कारण आहे की हे फक्त मोदीजीच्याच काळामध्ये होऊ शकतं की आमच्यासारख्या सामान्य माणसालासुद्धा हा बहुमान या ठिकाणी मिळू शकतो, हे या निमित्तानं या ठिकाणी सिद्ध झालेलं आहे. मित्र, बोलणारी बरीच मंडळी आहे. मी केवळ नार्वेकर साहेबांचंच नाही तर आपल्या सगळ्यांना, ज्यांना या ठिकाणी आम्ही ज्यांचं स्वागत केलं त्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. नाथा भाऊ, अहो शासनाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेचे लाभार्थी झाल्याबद्दल अभिनंदन. अहो धन्यवाद नानूशेठ. अहो मग कधी घेताय घर बांधायला? अहो उद्या सुरुवात करतोय. हा काय निघालं बांधकामाचं साहित्य आणायला बाजारला. अरे ये आणि कशाला? बांधकामाचं साहित्य आणण्यासाठी वेगवेगळ्या दुकानात जावं लागेल. घरी परतायला वेळ लागेल आपल्याला. अगे याची काय बी गरज नाही बघ. आता घरकुल मार्ट आहे ना. घरकुल मार्ट? हो घरकुल मार्ट. महाराष्ट्र शासनाने महिला बचत गटाच्या माध्यमातून बांधकामाचं साहित्य वाजवी दरात मिळण्यासाठी सर्वत्र घरकुल मार्टची स्थापना केली. चला तर मग घरकुल मार्टला. घरकुल मार्ट महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम. महाआवास अभियान ग्रामीण महाराष्ट्र शासनाचा एकच ध्यास. 2022 पर्यंत सर्वांसाठी आवास. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. नाथा भाऊ, अहो शासनाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेचे लाभार्थी झाल्याबद्दल अभिनंदन. अहो धन्यवाद नानूशेठ. अहो मग कधी घेताय घर बांधायला? अहो उद्या सुरुवात करतोय.
हा काय निघालं बांधकामाचं साहित्य आणायला बाजारला. अगं ये आणि कशाला? बांधकामाचं साहित्य आणण्यासाठी वेगवेगळ्या दुकानात जावं लागेल. घरी परतायला वेळ लागेल आपल्याला. अगं याची काय बी गरज नाही बघ. आता घरकुल मार्ट आहे ना. घरकुल मार्ट? हो घरकुल मार्ट. महाराष्ट्र शासनाने महिला बचत गटाच्या माध्यमातून बांधकामाचं साहित्य वाजवी दरात मिळण्यासाठी सर्वत्र घरकुल मार्टची स्थापना केली. चला तर मग घरकुल मार्टला. घरकुल मार्ट महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम. महाआवास अभियान ग्रामीण महाराष्ट्र शासनाचा एकच ध्यास 2022 पर्यंत सर्वांसाठी आवास. और मुंबई ये फिल्म की नगरी है. ये अमिताभ बच्चन भी रहते हैं, पीयूष गोयल भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ और आप भी रहते हैं. तो ये फिल्म की बहुत बड़ी नगरी है. और मुंबई जैसा एक शहर महाराष्ट्र की तो राजधानी है ही है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का कैपिटल है. ये फिल्म इंडस्ट्री की राजधानी है. और हमारे मुरुगन जी, मेरा आज बहुत ही खुश है मन. मेरा आज बहुत ही खुश है मन क्योंकि दिल्ली से और तमिलनाडु से यहाँ आए हैं हमारे मुरुगन. तो आप इस डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री हैं. मुझे नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है. जिनको सामाजिक न्याय चाहिए वो मेरे पास आइए, और जिनको रेल का काम करना है, हमारे राव साहेब दानवे पाटिल जी हमारे रेल राज्य मंत्री है, कोयला मंत्री है. हमारे कपिल पाटिल जी इधर आए हैं. अगर आपको करना है कहीं भी अपील, अगर आपको करना है कहाँ भी अपील, तो जाकर मिलो हमारे कपिल. तो कपिल पाटिल हमारे किसानों के नेता है, गांव में रहते हैं. हमारे डॉक्टर भागवत कराड़ जी, ये हमारे अच्छे मित्र हैं, औरंगाबाद में रहते हैं. और बहुत सारे लोगों को मौका मिलता नहीं, लेकिन भागवत कराड़ इतने नसीबवान है कि उनको राजपट मिल गई. बहुत सारे लोग राह देखते हैं कि हमको राज्यसभा मिलनी चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, उनको मिलता नहीं. लेकिन भागवत कराड़ जी को नरेंद्र मोदी साहब ने राज्यसभा में भी ले लिया. मंत्री पद की जब लिस्ट बन रही थी तब उनका नाम भी आ गया, और खाली नाम आया नहीं तो उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको दे दी है. फाइनेंस के राज्य मंत्री वो है. तो महाराष्ट्र को अपने कितने 7 मंत्री है ना, कितने अपने, हाँ, महाराष्ट्र के 7 मंत्री है पूरे मंत्रिमंडल में. और मुझे भी पहले मौका नहीं मिला था. मुझे तो बहुत सारे लोगों ने दिया था धोखा, लेकिन मोदी जी ने दे दिया मुझे मौका. तो मेरी पार्टी छोटी पार्टी है. पहले पार्टी छोटी होती है, बाद में बड़ी होती है. तो मेरे पार्टी को भी मतलब ये मौका मिला है. और आज मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिल रहा है. हमारे हाथों से भी अवार्ड दे दिया है. और यहाँ सभी अधिकारी गण भी इधर मौजूद है. हमारे पी शांताराम जी के लड़के ये भी यहाँ मौजूद है. और बाकी के सभी अलग अलग क्षेत्र के फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी हैं. मुझे भी फिल्म के बारे में बहुत बड़ा अट्रैक्शन है. मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो कॉलेज छोड़कर मैं फिल्म देखने के लिए जाता था. और
मैंने भी कुछ 2-3 फिल्मों में मैं छोटा छोटा रोल मैंने किया है। अभी बड़ा रोल करने वाला था लेकिन मैं राजनीति में चला गया और फिर बड़ा रोल मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं जरूर राजनीति में मेरा रोल मैं करने का काम करता हूँ, गरीबों के लिए काम करता हूँ। और बहुत सारी फिल्में हैं जो गरीब समाज की, जो समाज का सत्य चित्रण है, ये सत्य चित्रण फिल्म के माध्यम से हमें दिखाई देता है। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का जीवन दिखाया जाता है, अमीर लोगों का भी जीवन दिखाया जाता है, बेरोजगार का जीवन दिखाया जाता है, महिलाओं का जीवन दिखाया जाता है। बहुत सारे विषय पर फिल्म बनती है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज मुझे हमारे अनुराग ठाकुर जी इस डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी हम सब लोगों को संदेश दे दिया है। मुरुगन जी का मुझे फ्रांस से फ़ोन आया था, आप इंटरनेशनल अवार्ड के लिए पेरिस में थे, फ्रांस में थे, वहाँ से फ़ोन आया था कि भाई आपको इस फंक्शन में आना है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि भाई ऐसे फंक्शन में आप मुझे बुला रहे हैं। तो मेरा आपके निमंत्रण पर मतलब मैं इधर आया हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कल दिल्ली जाना है मुझे कल, और आज मुंबई में हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी से, वो भी आकर हमसे 2 शब्द कहें प्लीज। सत्रहवीं फिल्म फेस्टिवल के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे सबके वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, जिन्होंने अभी अभी आपको सबको संबोधित करके यहाँ पे हंसी के फवारे फुलाए, और राव साहब दानवे जी ने उनको कहा शीघ्र कवि है, वो हमारे सबके नेता आदरणीय रामदास आठवले जी, ये शीघ्र कवि है, लेकिन हमारे मंच पे उपस्थित हमारे नेता राव साहब दानवे जी, ये तो स्टैंडिंग कॉमेडियन है। इन्होंने आज की नहीं कॉमेडी, क्यों की नहीं मुझे पता नहीं, शायद मराठी में बात करने का मौका मांगा, मुझे लगा कि अब सब हंस हंस के अभी थक जाओगे, ये उनकी खासियत है। और जिन्होंने हम सबको यहाँ पे निमंत्रित किया है वो हमारे मेरे मित्र आईबी के MOS मुरुगन जी, फाइनेंस MOS मेरे मित्र भागवत कराड़ जी, मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष और विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा जी, सभी मंत्रालय के अधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, 17वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे आज शुरू हो रहा है। खुशी की बात है कि 36 देशों के 360 फिल्मों का यहाँ पे हम सब आनंद ले पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास अगर 1 रुपया है और आपके पास भी 1 रुपया है, आपने मेरे से 1 रुपया मांगा, मैंने आपको दिया, तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, आपके पास 2 रुपया रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है और आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, मैंने आपसे टेक्नोलॉजी मांगी, आपने मुझे दी, आपसे मैंने टेक्नोलॉजी मांगी, आपने मुझे दी, और मैंने आपको दी, तो आपके पास 2 टेक्नोलॉजी होगी और मेरे पास भी 2 टेक्नोलॉजी होगी। तो ये सही मायने में फिल्म फेस्टिवल का यहाँ पे हमको उपयोग होगा कि जो टेक्नोलॉजी विदेश में है वो टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी और हमारी टेक्नोलॉजी है वो विदेश में जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच यही है। हम हमेशा कहते हैं कि शिक्षा हमें अंगूठी से साक्षरी तक ले आई और टेक्नोलॉजी हमें फिर से साक्षरी से अंगूठे तक ले आई।
ये अंगूठा कौन सा है? ये कागज पे लगाने वाला नहीं है। ये अंगूठा जो है वो टेक्नोलॉजी को लाइक करने वाला अंगूठा है। और यही प्रधानमंत्री हमारे चाहते हैं कि सभी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग इतनी प्रगति करें कि भारत को देखते समय लोगों के मन में ये उठे कि भारत कितना आगे जा रहा है। उसका एक अच्छा उदाहरण हम लोगों ने कोविड के वक्त भी देखा है। सारे विश्व के मन में ये सवाल था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भारत का, क्या होगा अगर कोई विदेश में वैक्सीन आएगी तो उसके 10 साल बाद भारत में आएगी। लेकिन सबसे पहले हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले 2 वैक्सीन भारत में बनाई और लगभग 80 से 85 देशों को हमारे देश में वैक्सीन देने का काम किया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच का नतीजा है। और यही वजह से फिल्मों भी आप बनाते हो तो आप में कितनी ताकत है। शुरू में ये मुख्य फिल्में बनती थी, लेकिन जो संदेश देना था वो बिना डायलॉग के भी संदेश जाता था। हम लोग अभी डायलॉग बोल के संदेश दे, लेकिन उस वक्त बिना डायलॉग के संदेश जाता था। ये ताकत जो है ये फिल्मों की है। मैंने मेरा बाइट लिया, उस वक्त कहा कि अभी डॉक्यूमेंट्री जो बनती है, शॉर्ट फिल्में बनती है, वो इंटरटेनमेंट की नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ संदेश होता है। देश को आगे जाने के लिए, समाज को आगे जाने के लिए, प्रगति के लिए जो संदेश देने का काम आप इस फिल्मों से करते हो, इसके लिए आपको जितनी भी बधाई दूं उतनी कम है। मैंने भी एक फिल्म बनाई थी, मैं भी एक फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। मराठी फिल्म बनाई थी मैंने, भस्का। दोबारा हिम्मत नहीं की। बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, लेकिन उसको इतना रिस्पांस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन आज खुशी होती है कि जो दादा साहब फाल्के की धरती है, इस धरती पर फिल्म फेस्टिवल होता है। और वो फिल्म फेस्टिवल में हमारे वी शांताराम जी के नाम से जो पुरस्कार मिलता है वो भी एक महाराष्ट्रियन आदमी को मिलता है। इसका गर्व हमें है। फिल्म में क्रांति लाने वाले महाराष्ट्रियन थे और कई ऐसे लोग हैं। सारे लोगों का इसमें योगदान है। सब महाभारत के अनेक राज्यों से आए हुए सभी का योगदान है, तभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ी है। इस सभी के योगदान से ये चल रहा है। अठौली जी ने कहा यहाँ पे कि हमारी मुंबई आर्थिक राजधानी है, वैसे फिल्मों की राजधानी मुंबई है। कितनी भी विश्व में मुंबई के लगत नजदीक आने की कोई कोशिश करेगा तो मुंबई की बराबरी कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए मैं आज ये फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि इसमें से जो संदेश मिलेगा वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना योगदान देके और ऐसी शॉर्ट फिल्में और ऐसी डॉक्यूमेंट्री और ऐसी एनिमेशन फिल्में बना के भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगे। जिनको यहाँ पे सम्मानित किया उनका सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। नार्वेकर जी का भी अभिनंदन करता हूँ। आप सबको इस फेस्टिवल के मौके पर आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नाथा भाऊ, अहो शासनाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेचे लाभार्थी झाल्याबद्दल अभिनंदन. अहो धन्यवाद नानू शेठ. अहो मग कधी घेताय घर बांधायला? अहो उद्या सुरुवात करतोय. हा काय निघालं बांधकामाचं साहित्य आणायला बाजारला. अगं ये आणि कशाला? बांधकामाचं साहित्य आणण्यासाठी वेगवेगळ्या दुकानात जावं लागेल. घरी परतायला वेळ लागेल आपल्याला. अगं याची काय बी गरज नाही बघ. आता घरकुल मार्ट आहे ना. घरकुल मार्ट? हो घरकुल मार्ट. महाराष्ट्र शासनाने महिला बचत गटाच्या माध्यमातून बांधकामाचं साहित्य वाजवी दरात मिळण्यासाठी सर्वत्र घरकुल मार्टची स्थापना केली. चला तर मग घरकुल मार्टला. घरकुल मार्ट महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम. महाआवास अभियान ग्रामीण महाराष्ट्र शासनाचा एकच ध्यास 2022 पर्यंत सर्वांसाठी आवास. जब भी लगने लगे प्यास पी लो आमूल छास. दिन भर रहो फर्स्ट क्लास पी लो आमूल छास. और कुछ न आए रास पी लो अमूल छास. जल्दी भर दो एक और ग्लास पी लो अमूल छास. पेट का ध्यान रखे खास पी लो अमूल छास. पी लो अमूल छास, रहो फर्स्ट क्लास.
नाथा भाऊ, अहो शासनाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेचे लाभार्थी झाल्याबद्दल अभिनंदन. अहो धन्यवाद नानू शेठ. अहो मग कधी घेताय घर बांधायला? अहो उद्या सुरुवात करतोय. हा काय निघालं बांधकामाचं साहित्य आणायला बाजारला. अरे ये आणि कशाला? बांधकामाचं साहित्य आणण्यासाठी वेगवेगळ्या दुकानात जावं लागेल. घरी परतायला वेळ लागेल आपल्याला. अगे याची काय बी गरज नाही बघ. आता घरकुल मार्ट आहे ना. घरकुल मार्ट? हो घरकुल मार्ट. महाराष्ट्र शासनाने महिला बचत गटाच्या माध्यमातून बांधकामाचं साहित्य वाजवी दरात मिळण्यासाठी सर्वत्र घरकुल मार्टची स्थापना केली. चला तर मग घरकुल मार्टला. घरकुल मार्ट महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम. महाआवास अभियान ग्रामीण महाराष्ट्र शासनाचा एकच ध्यास 2022 पर्यंत सर्वांसाठी आवास. पहिलीच वेळ आहे. डॉक्युमेंटरी फिल्म असेल, शॉर्ट फिल्म असेल किंवा ॲनिमेशन फिल्म्स असतील, फिल्म्स बनवणं, त्याची स्टोरी रचणं हे अत्यंत कला कौशल्याचं काम आहे असं मी समजतो. आणि त्या माध्यमातून आज ज्या कॉम्पिटिशन आहे, इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन, मी आत्ता माहिती घेतली, जवळजवळ 800च्या आसपास फिल्म्स आल्या होत्या. आणि या 800च्या आसपासमधून काही लोकांना अवॉर्ड द्यायचे, सिलेक्शन करणं. तर सिलेक्शन करत असताना जे नॅशनल आणि इंटरनॅशनल ज्युरी जे आहेत त्यांचं अवघड काम होतं. त्यांनीसुद्धा अत्यंत चांगलं काम केलं, म्हणून मी त्यांचं अभिनंदन करतो. आज व्ही शांताराम अवॉर्ड जे लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड आहे, ते अवॉर्ड श्री संजीव नार्वेकरजी यांना मिळालं. म्हणून मी त्यांचं, एक मराठी माणसाला मिळालं म्हणून त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आपण सर्वजण मिळून फिल्म बनवणं आणि फिल्म प्रोड्यूस करून तिचं रिलीज करणं हे महत्त्वाचं काम आहे. पण ती फिल्म चालली पाहिजे आणि त्याच्यातून मॉरल जे आहे ते मॉरल सर्वात महत्त्वाचं असं मला वाटतं. या मॉरलच्या माध्यमातून आपण सर्वजण एक समाज बांधवायचं, समाज बांधण्याबरोबर आपापल्यामधील माणुसकीला जागा ठेवून एक माणुसकीचं नातं वाढवण्याचं आणि त्याचबरोबर शेवटी राष्ट्र बनवण्याचं आपण सर्वजण काम करत आहात. म्हणून मला तुमचा सर्वांचा अभिमान वाटतो. या प्रसंगी बऱ्याच जणांना फिल्म अवॉर्ड मिळाले. ज्यांना फिल्म अवॉर्ड मिळाले त्यांचंही अभिनंदन. कारण 30 देशामधून छोट्या छोट्या फिल्म्स यांनी या कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घेतलं होतं. तर 30 पैकी काही ज्यांना प्राईज मिळालं, अवॉर्ड मिळालं, त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि जे प्राईज घेऊ शकले नाहीत त्यांचंसुद्धा अभिनंदन करून पुढील काळामध्ये ते यशस्वी होतील, त्यांच्यासुद्धा फिल्म चांगल्या होतील यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. एकंदरीत मी पाहता पाहिलं जवळजवळ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया 59 लाख रुपयाचे अवॉर्ड या फिल्म फेअरसाठी देतात असं समजलं मला. आणि खूप मोठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियातर्फे दिलेली एक आपल्यासाठी सर्वांसाठी मोठ्या तऱ्हेने प्रेरणा देण्याचं काम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया करत आहे. या प्रसंगी जास्त आपला वेळ न घेता परत एकदा ज्यांनी अवॉर्ड जिंकलं त्यांना मी अभिनंदन करतो. ज्युरीने अत्यंत चांगलं काम केलं, त्यांचंही अभिनंदन करतो. आणि आमचे जे मला असं समजलं की प्रत्येक 2 वर्षाला अशा प्रकारचा कार्यक्रम होतो. मागच्या कोविडमुळे जे 2 वर्ष झाला नसेल तरी सतत कार्यक्रम झाले पाहिजे आणि त्यातून जे नवीन नवीन फिल्म्स बनवणारे आहेत त्यांनासुद्धा प्रोत्साहन दिलं पाहिजे या मताचं मी आहे. या प्रसंगी आम्हाला बोलवलं, आपल्यामध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली त्याबद्दल संयोजकाचे आभार मानून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Now it's time for our chief guest, Honorable Union Minister Shri Piyush Goyal ji. I would request you to please come up on the stage and share your thoughts with us. Thank you. मान्य श्री मुरुगन जी, रामदास अठावले जी, रावसाहेब पाटिल दानवे जी, श्री कपिल पाटिल जी, श्री भगवत कराट जी, सभी सम्मान्य केंद्रीय मंत्री, मान्य श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी,
हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे स्थानीय आमदार हैं, मंच पर और मंच के नीचे विराजमान सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, वास्तव में मुंबई मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। ये बात अलग है कि अब थोड़े दिनों के लिए कुछ वर्षों से दिल्ली में ज़्यादा रहना होता है, लेकिन जब जब मुंबई आता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। अपने अपनों के बीच में आने का आनंद, अपनों के साथ मिलने का आनंद, अपनों के साथ हंसी खुशी तकलीफ हर एक चीज में जो अपने घर पे आने का स्वाद है, वो मुझे मुंबई आके मिलता है। तो आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे भी मौका मिला कि इस 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ के कार्यक्रम में आपके साथ भाग लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं नार्वेकर जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि आपको सम्मानित किया जाए, और वास्तव में आपके बारे में जितना पढ़ा, जितना देखा और आपके विचार सुने, बहुत अच्छा लगा कि आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स या आर्ट फिल्म्स में ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन जिस तरीके से आपने बहुत ही सरल स्वभाव का परिचय दिया, और यहाँ तक कि पत्नी का तो चलो हम सब लोग ही गुणगान गाएंगे, सभी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसके बगैर तो वास्तव में काम करना मुश्किल है। बहुत सैक्रिफाइस लगता है परिवारजनों का, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में अपना पूरा तन मन धन दे दे, तो परिवार का सैक्रिफाइस तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने एक एक लाइब्रेरियन और कर्मचारी का भी, फिल्म डिवीजन का कर्मचारी तक का सबका सम्मान किया, सबका धन्यवाद किया, मैं समझता हूँ आपके स्वभाव का भी, आपके सरल नेचर का भी ये परिचय है, आपके संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय आपने हम सबको दिया। और वास्तव में और भी ज्यादा मुझे लगता है सभी जूरी को आनंद आएगा कि उन्होंने सही चॉइस किया है आपको आज सम्मानित करके। किरण जी हमारे भाई हैं, बहुत वर्षों से हमारा सानिध्य रहा है उनके परिवार के साथ, और वास्तव में मुंबई फिल्म जगत के एक ऐसे हस्ती हैं जिन्होंने हर प्रकार की फिल्म्स, चाहे वो उनके परिवार ने तो बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत प्रसिद्ध रही, लेकिन फिल्में हो, साहित्य हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, आर्ट फिल्म्स हो, हर तरीके से शांताराम परिवार का जो योगदान है ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपका भी साधुवाद करता हूं किरण जी। हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, उन सब के लिए जो एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी वो हमारी लता दीदी, जिनको स्वर कोकिला के नाम से भी हम सब सम्मानित करते हैं। वास्तव में लता जी का योगदान भारत के पूरे फिल्म जगत ही नहीं, लेकिन पूरे भारत की जो एक परिचय है विश्व भर में, उसमें उनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, याद रखा जाएगा। और मैं समझता हूं अगर उनको एक कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया बोला जाए, जिन्होंने पूरे भारत के इतिहास को ही नहीं, भाई भारत की जो ट्रेडिशन है, भारत की जो सालों साल की जो एक हेरिटेज है, उसको पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने का योगदान किया। उनका जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कल्पना थी, जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग माध्यम से हम सभी को प्रोत्साहन भी दिया, देश का मनोबल भी बढ़ाया जब जब देश के ऊपर कोई संकट आया। और मैं समझता हूँ सभी हमारे जो कलाकार हैं, भाई बहन हैं, उन सब के लिए भी
वो एक प्रेरणा की स्रोत बनी रहेंगी। मैं आज उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और मैं समझता हूं हम सब की तरफ से उनको उनकी यादगार में मुंबई फिल्म फेस्टिवल एक परमानेंटली लता दीदी के लिए कुछ ना कुछ रोल क्रिएट कर सके, उसके लिए मैं आप सबको, मुर्गन जी इस पे आप लोग भी चिंता करना कैसे हम लता दीदी का जो योगदान है भारत के लिए और मुंबई के लिए और जो फिल्म जगत के लिए उसको कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करें, इसके ऊपर भी आप जरूर विचार करना। आज के दिन लो बजट फिल्म्स भी बहुत बड़े बड़े सफलता देख रही हैं। मुझे याद है कुछ 2-3 साल पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आई थी, बहुत बड़ी बजट नहीं थी, एक वास्तविकता को लगभग फिल्म के रूप में और उसमें जो लिबर्टी ले सकते हैं वो लिबर्टी लेके, क्योंकि पूरी जानकारियां तो शायद फिल्म मेकर्स को हर घटना की नहीं मिल पाती है, पर वो जब बनी थी तो उसने एक पूरे देश में एक लोगों के बीच में उत्साह पैदा करने का काम किया। छोटी बजट फिल्म थी लेकिन बड़े रिटर्न्स भी मिले और लोगों के बीच में भी बहुत उसकी प्रसिद्धि हुई। ऐसे ही हाल में कश्मीर फाइल्स एक लो बजट फिल्म थी, लेकिन हम सबको फिर एक बात याद दिलाया कि कैसे इतनी बड़ी घटना हुई थी, कैसे इतना बड़ा अत्याचार अन्याय एक पूरे समुदाय के साथ किया गया, कैसे इनको प्रताड़ित किया गया और उनको अपना घर और प्रदेश छोड़ के अलग अलग जगह जाके रेफ्यूजी बन के रहना पड़ा। और एक लो बजट फिल्म ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान प्राप्त किया और पूरे देश में एक नया मैसेज दिया कि कैसे हम सबको मिलके एक दूसरे की चिंता करनी है, कैसे हमने चिंता करनी है कि इस प्रकार का कभी कोई कांड भारत में हो ना पाए। मैं समझता हूँ, मैं क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया से जुड़ा हूँ, वो मेरे मंत्रालय से लगे रहते हैं और स्टार्टअप जब यूनिकॉर्न बनती है तो हम सब बहुत आनंद लेते हैं। यूनिकॉर्न यानी उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक, 7,500 करोड़ रुपए से अधिक जब वैल्यू हो जाती है तो स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न का दर्जा देते हैं। ऐसे ही आप सब जो आर्ट फिल्म्स बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, आज के दिन जो एनिमेशन फिल्म्स की भी एक बहुत बड़ा रोल हो गया है फिल्म जगत में, आप सब भी अपने अपने माध्यम से एक प्रकार से नए आइडियाज को स्टार्टअप करते हैं, नए आइडियाज को सीड करते हैं और आगे चल के यही आइडियाज कई बार देश को एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं, देश को एक आगे के लिए नया दृष्टिकोण देते हैं। तो मैं समझता हूं आप सब भी अपने आप में एक तरीके से यूनिकॉर्न का काम करते हैं, एक मैसेंजर का काम करते हैं और ये मैसेज आज अलग अलग माध्यम से जाते हैं, चाहे वो टेलीविजन का माध्यम हो जिसको सिल्वर स्क्रीन कहा जाता है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स हो जिसमें अलग अलग प्रकार से चीजें लोगों तक पहुंचती हैं, और चाहे दूरदर्शन हो, नए अलग अलग टेलीविजन चैनल्स हो, फिल्म की दुनिया हो, फीचर फिल्म्स की दुनिया हो, इन सब में जोड़ के एक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं लेकिन मनोरंजन के साथ साथ एक बहुत बड़ा आप योगदान देते हैं देश को भी एक बनाने के लिए, देश को भी एक नया दिशा देने के लिए। और मैं आप सबको बधाई दूंगा किस प्रकार से आपने देश में मनोरंजन का भी माध्यम अपनाया और ये संदेश देने का भी माध्यम अपनाया, और ये माध्यम सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी नहीं, अलग अलग राष्ट्र में जो अलग अलग भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं हैं, उसको भी प्रोत्साहन देने का काम आज आप सबने किया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का टैलेंट आप सब में है, भारत की फिल्म इंडस्ट्री में है, और वो सिर्फ मुंबई नहीं, बॉलीवुड तो एक सिंबल है, कलकत्ते हो तो उसको शायद टॉलीवुड कहा जाता है, दक्षिण में चाहे आंध्र हो,
कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात हो, उड़िया हो, पश्चिम बंगाल, देश भर में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार की फिल्म जगत की जो आज पहचान बनी है, वो अपने आप में भारत को विश्व पटल पर लेके जाती है। मैं समझता हूं कि आगे चल के एनिमेशन फिल्म्स में भी हमें और फोकस देना चाहिए। बहुत असीम संभावनाएं हैं एनिमेशन फिल्म्स की, और उसमें हमारी नई पीढ़ी को मैसेज देना भी बड़ा सरल हो जाता है। और मैं तो चाहूंगा कि अब डिज्नी हो या वार्नर ब्रदर्स हो, मार्वल स्टूडियोज हो, ये बड़े बड़े अब जो कंपनियां हैं वो भी भारत में आके फिल्म्स बनाए। फिल्म मेकिंग का कॉस्ट भी कम होगा, हमारे आर्टिस्ट का हुनर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं, बहुत अच्छे स्किल्स हैं, चाहे फोटोग्राफी हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, एक्टिंग हो, अलग अलग जो इस दुनिया के साथ जुड़े हुए कामकाज है उसमें हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। और मेरा मानना है कि आगे चल के इस टैलेंट को भारत विश्व में भी अपना नाम कमाएगा, ये मुझे स्पष्ट आगे चल के दिखता है। और इसी के माध्यम से करोड़ों युवा युवतियों को, आर्टिस्ट को रोजगार का भी साधन मिल सकता है। मुझे याद है 1998 में 1998 में जब माननीय सुषमा स्वराज जी आईएनबी मिनिस्टर थी, तब उन्होंने फिल्म सेक्टर को, फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का स्टेटस देने का काम किया था, जिसके कारण फिल्म प्रोडक्शन को बैंक से भी लोन मिलना शुरू हुआ। और जो गलत काम होते थे एक जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में, उस सब से भी हमें छुटकारा मिलने का साधन, माध्यम मिला। और आज मैं कई फिल्मों को जब देखता हूं, और मुझे फिल्म देखने का बड़ा शौक है, खासतौर पे जब दिन भर के कामकाज से फ्री होते हैं और रात को जब सोने के पहले आधा पौना घंटा कोई फिल्म देखने को मिल जाए तो बड़ा माइंड भी काम हो जाता है, कंपोज हो जाता है, और नींद भी अच्छी आती है। तो कभी दलीप तहिल जी की कोई पिक्चर देखने को मिल जाए, कभी कोई और मुझे ह्यूमर में ज्यादा मजा आता है दलीप जी। आई एंजॉय ह्यूमर मच मोर। उसमें इट चिल्स यू आउट, इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेजेडी। यहाँ तक कि कल मैं जब एयरपोर्ट पे था, लंदन में थोड़ी फ्लाइट लेट हो रही थी, तो कागज पढ़ पढ़ के, भाषण दे दे के इतना माइंड क्लॉग था, इतना हेक्टिक शेड्यूल रहा था, तो हमने अपने फोन पे ही, कौन सी पिक्चर थी, मुझे लगता है वेलकम थी वो, जिसमें वेलकम पिक्चर थी, वेर यू हैव फिरोज खान ऑल्सो एंड अनिल कपूर। तो हमने अपने फोन में खोल के उसके कुछ कुछ पार्ट्स वी वर वाचिंग वेलकम, जस्ट टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन। मैं ये इससे कह रहा हूं कि आप लोग का योगदान वास्तव में बहुत बड़ा होता है, और इस योगदान को हम सभी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी को साहित्य और कला में बहुत शौक था, और जब भी वो थोड़ा भी समय होता था उनके कार्यक्रम में, तो उनको मराठी नाटक देखने का बहुत शौक था। कुछ नाटक देखने के लिए कुछ बार तो मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। एक तो मुझे अभी भी याद है, शायद किरण जी को ज्यादा याद होगा, शीर्षक मैं याद कर सकता हूँ, उम्बरठा। मुझे ध्यान नहीं है, शायद नेहरू सेंटर ही आए थे या किधर गए थे उम्बरठा देखने के लिए। आई डोंट रिकॉल, इट्स नाउ वेरी वेरी ओल्ड, शायद 40 साल हो गए होंगे, 35-40 साल हो गए होंगे। पर उनको इतना शौक था कि जरा भी समय थोड़ा निकल पाता था तो वो मराठी नाटक देखने में बहुत शौक रखते थे। तो मुझे लगता है कि आप सब इसी प्रकार से साहित्य और कला की दुनिया में प्रसिद्धि पाते रहें। आप सबके फिल्म्स इस पूरे फेस्टिवल के दौरान देखे जाएंगे, और मेरा मानना है कि आप सबके काम के माध्यम से जो इस देश में आगे चल के
नया उत्साह, नए उमंग के साथ पूरे देश को हम सबको साथ मिलकर काम करना है, सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। पूरे देश में हर व्यक्ति के जीवन में एक नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ, नए अवसर प्रदान करने का जो हम सबके ऊपर दायित्व है, वो हम जरूर मिलके काम कर पाएंगे। मुझे अंत में एक फिल्म याद आती है जिसमें लता दीदी का एक गाना था, ए मालिक तेरे बंदे हम। लता दीदी ने ये शायद बहुत साल पहले, ए मालिक तेरे बंदे हम। अच्छा वाह, सो मुझे इतना याद नहीं था, बट आई एम डिलाइटेड कि आपके साथ भी इसका कनेक्शन है। उस पिक्चर में अगर आप याद करें तो एक जेलर के बारे में जो 6 प्रिजन के कन्विक्ट्स को अच्छे व्यक्ति बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जेल में कोई है, जेल में कोई व्यक्ति गया है तो जरूर कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा। उसके बावजूद जिस प्रकार से इस पिक्चर में बताया कि वो उनके मन को और उनके दिल को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो अपनी गारंटी पे उनको जेल से बाहर लेके जाता है, और एक ओपन प्रिजन का एक्सपेरिमेंट जो उस फिल्म में दिखाया गया है, जिस प्रकार से एक पिता तुल्य वो उन सब की देखरेख करता है, उनका ध्यान रखता है, जिस प्रकार से अपने खुद के जीवन को एक प्रकार से दांव पे लगा के वो परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है लोगों को गलत रास्ते पे ना जाने के लिए, और अंत में सफल होता है। मैं समझता हूं एक छोटा उदाहरण है पर बहुत बड़ा मैसेज है कि आप सबके काम का कितना बड़ा योगदान है आगे आने वाले भारत के निर्माण में, आगे आने वाले भारत के सामाजिक जीवन में। कैसे your contribution to art, to culture, to tradition, to heritage, to our history, to our legacies, to our social values, our family values, our rich culture, your contribution to each one of these facets of our life is absolutely invaluable. I pray you continue with your good work. I am sure that going forward, each one of you will come up with nuggets which will help define India, which will help give our young boys and girls, many of whom I see in this room today, the right direction and a bright and glorious, prosperous future. My best wishes to all of you for the forthcoming festival, and I am sure many of you will be winning awards through the various screenings that will happen in the next few days. I wish all of you the very best in your efforts. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर फॉर एनकरेजिंग अस। आपने बहुत खूब कहा कि सिनेमा चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो या फिर एनिमेशन हो, उसमें असीम शक्ति है, असीम संभावनाएं हैं और संदेश हम तक पहुंचाने की असीम शक्ति, पावर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। I would also like to tell everybody, especially our dignitaries here, that we have a cultural program after which we have the screening, and we'll request all of you to join us for dinner after that. Thank you. All good things happen and there is gratitude to be expressed. Now may I request the General Secretary of Indian Documentary Producers Association, IDPA, Shri Sanskar Desai ji, to present the vote of thanks, please. Good evening, friends. Very respected dignitaries on the dais, dignitaries present in the audience, and my dear friends, and congratulations Sanjit ji
from the IDPA, from my personal side and from IDPA. I have a very good duty to perform of thanking people who have been contributing to the success of this year's MIFF 2022. But before that, I would like to say that this year has been is special. As a lot of films from countries have been selected to this festival. It will indeed be a treat to watch such interesting and diverse films on diverse subjects. The Indian Documentary Producers Association, or IDPA as it is commonly known, has been a partner of MIFF since its inception in 1990. We have been conducting open forums, seminars, master classes, various workshops in the past, and we conduct the open forum at the International Film Festival, IFFI Goa also. We would like to promise our Minister and Bakarji that on behalf of IDPA, we shall continue to support this movement, whether it has been Films Division and now of course the new avatar in NFDC. We will always be standing with the documentary and short filmmakers. Sponsors, I have to start thanking them. Sponsors, NABARD, National Handloom Development Corporation, Tourism Corporation of Gujarat Limited, Film Bandhu, Government of UP, Indian Tourism, Ministry of Tourism, the Indian Documentary Producers Association, the Japan Foundation, New Delhi. Mr. Carter Pilcher from Shots TV, Mr.